Hello. Hello, Vanya, can you hear me? Okay, what I'm going to do, can you hear me? Okay, now, staying on. Okay, now what I'm going to do is that I will make you the host now. Okay? I will make you the host of the meeting. और उसमें ये होगा कि you will be allowing people to enter the room or exiting the room. Okay, you'll be responsible for that. ठीक है बेटा? Huh? Yeah, you go, but you stay in touch with me, all right? Via WhatsApp. Can you see where's my mobile? Ah, it's right here. There are people already in the waiting room. I will let them be there till our session kicks off. I cannot hear you. I cannot hear you. You're on mute. Keep your WhatsApp tab on as well. Ah, I'm turning. Yes. जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे देंगी मैं उसके उस क्वेश्चन के नीचे बड़ा सा डन लिख दूंगी ताकि आप रिपीट ना करें उसे और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भेजूंगी ठीक है हाँ, I don't think ऐसा होगा इंशाल्लाह, but you can always message me if there's any issue. ऑल्सो इन योर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में अपने जूम के लिंक को ऐड कर दीजिए In my WhatsApp? या उसके मैंने किया डिस्क्रिप्शन हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन में, but डिस्क्रिप्शन वो I हाँ नहीं मेरी डिस्क्रिप्शन में नहीं है. I didn't add it there, but what I did was that मैंने उसको as a post अपने status पे share किया हुआ था with the link and everything. But I'm not sure how many people will see that and join. Wait, let me make you the host. अच्छा इसमें नीचे आ रहा है options आ रहे हैं. One participant can share at a time. Security में है. Start video, no. Unmute themselves, no. They don't have the permission. They cannot start the video also. They can फर्स्ट be. क्वेश्चन भेज दिया Okay, now I'm making you the host. Tell me, okay? Sorry, I muted you by mistake. Hang on. I've asked to unmute you. Can you do that? Done. Right. Okay. Now I will make you the. So will I be visible to the people on screen? You have to then just turn off your video for that. There's a girl, she wrote to us in our, I think her name is Namra. Yeah. On the Facebook Khula group. She messaged on that one. Yeah, I'm gonna add her question as well. Yeah, she had this question regarding the fact that her son has got a special issue and she her husband is giving her trouble in terms of that Khula cares ke मामले में. So I told her, I said, if you like, you can come and, you know, as an anonymous person. So we have actually 3 people. There's Iram Raza. She will probably talk a little bit about her case. There is another lady, Nida Mirza. She will join in. She will talk about her case. And then there's this girl, Namra.
Okay. ठीक है? Mhm. तो इन लोगों को जो है हम लोग क्या करेंगे कि we will allow them Inside the meeting room. no, not just in the meeting room. We will allow them to open the mic. हम इनका mic खोल देंगे so that when they are ready, they will message and I will let you know. और मैं आपको बोल भी दूंगी कि please इनको ना just अच्छा, वैसे आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग्स इसमें है कि सबके माइक्स ऑफ हैं, सिर्फ होस्ट के पास कंट्रोल है माइक्स ऑन ऑफ का, राइट? yeah. ओके, ठीक है. Somebody has a very long question and they are constantly messaging कि मेरा question बहुत important है. Should I let them in? हाँ. Well, जैसे आपने Thank you, floor Vanessa. open कर दिया ना, then yeah. Okay. Okay, it's still recording at my end, so I will let that happen. There was a lady who came and then she left. Can you also do one more thing in the Yeah, I'm meantime? gonna put up stories right now. Yeah, and just tell them that the webinar is Start just in 15 starting. minutes. Yeah. I think 5 minutes लिख दो because जब तक लोग उसको देखेंगे, they'll find out and they'll come. Yeah.
सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को ये कहें कि जी डिवोर्स कोई बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला ने शादी, घर बसाना इसको पसंद किया है, इसको कहा है कि ये करना चाहिए। लेकिन हमारे अब माशरे में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और अल्लाह ताला ने वाहिद इस्लाम में जो है एक औरत को ये चीज की इजाजत दी है कि अगर वो किसी तकलीफ से या किसी मुश्किल से वो गुजर रही है तो अल्लाह ताला ने ये राइट उसको अता किया है, यानी का खुला का, यानी डिवोर्स का। कुछ लोग जो है हर जगह अच्छे और बुरे, हर लोग होते हैं, हर जगह लोग होते हैं, तो कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज्यादा खवातीन पाकिस्तान में इस वक्त सफर कर रही हैं और उनकी मुश्किलात हैं। और इसीलिए आज हमने ये जो है आप लोगों के लिए तकरीब रखी है, ताकि इसमें हम आप लोगों के लिजिट सवालों के जवाब दे सकें, ताकि कोई अगर खातून जो जेन्युइनली सफर कर रही हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स में, उनकी सफरिंग में आसानी हो। And while we are discussing this, I can see, mashallah, that our guest for today has signed in, Barrister Zehrah Vayani Vayani from Karachi. वो हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुकी हैं, वो अपनी ऑडियो कनेक्ट कर रही हैं, और जब तक वो ऑडियो कनेक्ट करती हैं मैं चाहूंगी कि मैं उनका एक आप लोगों को सबको उनका जो है एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूं, ताकि आपको पता हो कि क्यों हमने इनको खास तौर पे आज बुलाया है। बैरिस्टर ज़हरा जो है, शी इज अ लिटिगेटर with broad experience in civil, family, property, banking, media, commercial, arbitration, criminal and constitutional matters. वो licensed है एडवोकेट हाई कोर्ट सिंध की। मिस व्यानी हैज बीन प्रैक्टिसिंग लॉ इन कराची, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको माशाल्लाह से प्रैक्टिस करते हुए पाकिस्तान में। उसके अलावा उन्होंने LLB परस्यू किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। इनको बुलाया गया था बार ऑफ इंग्लैंड और वेल्स ने 2008 में। वहां पे जब वो काम कर रही थी तो उन्होंने न्यूयॉर्क का भी बार एग्जाम माशाल्लाह से पास किया। अब वो अटॉर्नी बन गई हैं एट लॉ न्यूयॉर्क की भी। शी इज अ फाउंडिंग मेंबर, उनकी एक लॉ फर्म है मलकानी व्यानी जो कराची में होती है, एंड शी इज प्रीवियसली इट वाज द चेंबर शेयर्ड विद मिस्टर खालिद जावेद खान। अब वो खुद जो है वो उसकी CEO है। She is also the CEO of the Women Lawyers Association, जो कि बहुत बड़ी बात है, इस वजह से हमने खास इनको आज मदऊ किया है। और एक strong advocate है for the advancement and empowerment of women in the legal profession and otherwise. और सबसे अहम बात मैं आपको बताती चलूं कि she is also the subject matter and technical expert to the Provincial Parliamentary Advisory Committee for Child Abuse. तो ये इंशाल्लाह फिर हम इनके साथ किसी वक्त बातचीत इस पे करेंगे। वानिया, आप प्लीज बैरिस्टर साहिबा का जो है उनको अनम्यूट कर दीजिए ताकि हमारी उनसे गपशप शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैरिस्टर ज़हरा। Walaikum salam. So sorry for the delay. Not at all, Zara. I know कि बाज़ दफ़ात जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो जहाँ हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, कभी कभार इस तरह की छोटी चीजें हो जाती हैं, and that's not at all a problem. मैंने आपके आने से पहले लोगों को थोड़ा सा एक brief introduction about yourself, a little bit about what She Empowers You does, and what I can see is already a lot of questions are pouring in. We have not even kick-started. So I just wanted to ask you that would it be possible for you to turn your video on, or will you continue? Oh yeah, of course. I will Thank turn you. that. Thank you so much. I think my video is on. Please. Okay. As soon as your video comes on, Zara, we'll be able to tell when it's on. Okay. तो हम यहाँ से अपना सेशन शुरू करते हैं बैरिस्टर साहिबा। दैट आई वाज जस्ट टेलिंग पीपल कि ये हमने सेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी थे जो हमें आए कि शायद उनको लगा कि हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। एम्पावरमेंट का मकसद ये नहीं है कि आप किसी को कि क्या आप किसी चीज की नेगेटिविटी जो है उसको प्रमोट करें, लेकिन ये कि ये एक राइट अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर सीइंग द ट्रेंड्स इन पाकिस्तान दैट बहुत ज़्यादा अब्यूज़, ख़वातीन के राइट्स, उनके हकूक़ जो हैं वो उनसे ले लिए जाते हैं, उनके साथ
शादी के बीच में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दे आर फोर्स्ड के इतना बड़ा अपनी जिंदगी का वो स्टेप लेती हैं। और उसके बाद ये कि दिस इज वेयर आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, वो इसके हवाले से क्या कहती है। आई वुड लाइक यू टू जस्ट ड्रॉप अ फ्यू shed a bit of a light on that first. देखिए, as far as the constitution is concerned, does the constitution talk about rights, women's rights and access to property? Yes. Does it talk about discrimination? Yes, it does. But does it talk about specifics about domestic violence, or about women's rights as general, in general specifically? No, it doesn't. So what we then gather is that we then have different statutes which have been promulgated over the years, and on statutes के तहत हम फिर different cases file करते हैं for different kinds of for example for khula हो गया, divorce, custody, maintenance, etc. जो women centric होते हैं, but of course I mean that is of course relating to the statute itself. ठीक, आपने अभी एक वर्ड यूज किया खुला या डिवोर्स, एंड मेरे ख्याल से कुछ लोगों के साथ ये होता है खास तौर पे, एंड आई थिंक हम थोड़ा सा इसको शुरू से डिस्कस करते हैं कि जब हमारा निकाह नामा आता है खास तौर पे, एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट विद यू इन डिटेल। हमारे निकाह नामा में अक्सर जो है वो शकें काट दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें आपको राइट ऑफ खुला नहीं मिलता। तो खुला में और डिवोर्स में क्या मेन डिफरेंस है? ओके, सो ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों को पता नहीं होता कि डिफरेंस क्या है। डिवोर्स का हक जो इस्लामिकली होता है वो मर्द का हक होता है, बट द राइट ऑफ डिवोर्स कैन बी गिवन टू द वुमन इन द निकाह नामा। नाउ व्हाट इज दैट राइट? वो राइट होता क्या है? द राइट इज द मैन इज गिविंग, और द हस्बैंड इज गिविंग द राइट, हिज राइट ऑफ डिवोर्स टू द वुमन to divorce herself, if that means. So the divorce always comes from the husband technically, but because जब वो निकाह नामा में आपने बॉक्स को टिक किया होता है, that the woman of the wife is allowed कि वो अपने आप पर divorce, अपने आप को, she can divorce herself technically. That is the right, that the man's right is given to the woman. So it always comes from the man. Now निकाह नामा में, if I start from the beginning and then we can go on. अब divorce और खुला में difference क्या है? Divorce is that right that I just mentioned. Khula is a woman's right. So a lot of times जैसे आपने कहा कि the wife or a woman does not have a right of divorce निकाह नामा से, तो आप फिर इस्लामिकली खुला के लिए फाइल कर सकते हैं। खुला का निकाह नामा से कुछ लेना देना नहीं है। खुला is a separate, is a right. खुला एक औरत का हक है। Amazing. और you can file for खुला at any point, और उसमें आपको वजूहात भी देने की जरूरत नहीं होती। तो अगेन बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे केसेस दिखते हैं जहाँ पर लोग अनश्योर होते हैं, उनको अंदाजा नहीं होता कि हमें खुला कब ग्रांट होगा, क्यों ग्रांट होगा, कैसे ग्रांट होगा। तो ये बहुत अहम बात है, और मौजू भी बहुत अहम है, क्योंकि खुला आपका हक है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मैं अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। अच्छा, इस बेसिस पे आपका खुला हो सकता है, बट खुला के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं? So khula can be applied for only with an application to the court. Okay. ठीक है, तो खुला के लिए कोई डीड नहीं बनता, और खुला का प्रोसेस ये होता है कि आप कि a wife will of course engage a counsel, और फिर वो एक एप्लीकेशन बनती है, और वो खुला की एप्लीकेशन जो प्लेन कहलाती है वो आप फाइल करते हैं कोर्ट में। Once you file in court, you can also add 2 witnesses. Just even though the witnesses are not needed, but kabhi there are some certain judges, of course हर district में, हर jurisdiction में कभी there are different requirements. So I always say that आप 2 witnesses, आपके immediate family member ना हो, आपके friends हो, आपके रिश्तेदार हो जाएं, आपके neighbors हो जाएं, who can come in and they can they will give their witness statements. उनकी Now, apart from that, आपने सिर्फ you can write only कि मुझे अब नहीं रहना अपने शौहर के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में अगर आपका कोई गार्डियनशिप और कस्टडी जो मौजूद है, हम बाद में उनको आई थिंक टच करेंगे, अगर आपका केस ऐसा है कि बाद में आपने अपने बच्चों की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई करना है या कस्टडी के लिए अप्लाई करना है, तो अपने खुला के केस में अपना बेसिस बना सकते हैं। आप अपने खुला के केस में वो सारे वजूहात डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपको नहीं रहना, बट ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है।
बस ये आपको इन अ वे प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपके बाकी केस फाइल होंगे बाद में, तो एक होता है कि आपकी स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, आपने जो एक बात कही है वो हर केस में सिमिलर बात हो और आपकी तरफ एक केस स्ट्रांग हो जाता है इन द लॉन्ग रन. नाउ once you apply for खुला, प्रोसेस ये होता है हमारे कोर्ट का कि it's filed in the family court, it's filed in the so low courts, district court की jurisdiction होती है, जो हाँ family courts होते हैं. हर district, so if I speak about Karachi, we have 4 districts. We have west, south, east, and we have central. तो जो भी जहाँ आपका the lady is residing at the moment, जहाँ खातून रह रही हो उस वक्त, वहाँ का करीबी जो पुलिस स्टेशन होता है, that police station is decides कि आप कहाँ फाइल करेंगे, किस फैमिली कोर्ट में फाइल करेंगे अपना केस. Of course, your lawyer is the one who sort of guides you through that, but I'm just giving you an overview. Now, once you file the case there, आपको there's a message saying that my audio is low. Can you hear me properly? I can hear you pretty well. एक दफा हम audience से भी पूछ रहे, and they're also asking about your camera. तो मैंने उनको कहा कि you're having some technical issue. If you can recheck. Would you want me to start this session? नहीं, don't restart okay. it. बस आप देख लें अगर आपका दोबारा. If you can just try to turn on your camera again, that would be wonderful. I'll do that again. Okay, because over here it's been on. Chale, I'm trying. Okay. Let's see. Chale, inshallah हो जाएगा. Please carry on. Ji, sorry. So then, so then when we talk, so once the application is filed, अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि how long will it take for a khula to be to actually be granted? I usually say 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक. I know there are some cases जो बहुत लंबे खींचते हैं, other side judgment लेती है, but I'll guide you exactly why and how. And if there are any lawyers also listening in, they will also maybe have an idea. So what happens is that आप पहले, now there are 4 modes of service जो हमारे कोर्ट का निजाम है. The first notice goes via bailiff. The moment you file the application, आप उसके बाद bailiff के through एक hand by hand delivery होती है. बिल्कुल. अच्छा, उसके बाद in that the notice is to come on the next date for the husband. अगर वो appear ना हो next date पर, तो तो second जाता है via a method called pasting. जो defendant का address होता है, defendant meaning the husband, उनके घर के बाहर एक notice paste हो जाता है. अच्छा. वही notice. सही. अब then comes the second date after the pasting. जब उस डेट तक husband फिर भी नहीं आता या does not appear in court, तो फिर आप TCS करते हैं, जो recorded delivery कहलाती है. It could be leopard TCS Pakistan post. ठीक है. सही. अच्छा जी. And even अगर third date के बाद भी वो ना आए, so the last 4th date पर publication होती है. So publication can be in a local Urdu newspaper or English newspaper. जी. तो those are the 4 modes of service जो requirement होती है by law. Once the 4 modes of service is complete हो जाएं और फिर भी डिफेंडेंट या हस्बैंड नहीं टर्न अप करे कोर्ट में, पेश ना हो कोर्ट में, तो फिर एक डेट का मौका मिलता है, the 5th date usually. अब bear in mind हर डेट 7 दिन या 10 दिन की इंटरवल में मिलती है, unless of course जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा था etc. या कोर्ट्स की कोई स्ट्राइक हो जाए, that is of course something which is unfortunate. लेकिन अदरवाइज 7 से लेकर 10 दिन में आपको नेक्स्ट डेट मिल जाती है, especially in these kind of cases. Now when we talk about the 4th mode of service हो गई, आपकी सर्विस held good हो जाएगी फिर, right? That means you do not need to serve the defendant anymore. उसके बाद डिफेंडेंट को कोई और नोटिस जाने की जरूरत नहीं है. Okay. 5th date तक the judge will wait, most probably, usually यही होता है. उसके बाद the 6th date पर the defendant is barred. Basically, what happens is that the court assumes that he has been the service has been held good, the service has been he's been notified, और वो चाहते नहीं है वापस आना. सही. कोर्ट में आना and अपना बयान देना. अब once that happens, then the khula is the date after the khula is usually granted. What I also do in between, and this might be helpful for the young lawyers as well, is that
after maybe 4 or 5 dates, I gave a statement by my client, the lady herself, the wife, saying कि वो interested नहीं है, as you can see he does not want to come in, तो आप मुझे please grant कर दें, because this is my legal right. सही. Now तो इस तरीके से, and then Khula is granted. Now before going on to the next stage, let me go back a bit. In the case के आपके चारों notices के दौरान the defendant turns up in court, right? वो तीसरी डेट हो गई, चौथी डेट हो गई, या फिर बिल्कुल 5वीं डेट पे वो आ गए, बार होने से पहले वो कोर्ट में उन्होंने he appears in court. तो उनका that will relate by a bit more. Why? Because the fact that पहले उनका वकील आके पहले वकालतनामा सबमिट करेंगे, उसके नेक्स्ट डेट पे वो जवाब देंगे. जरूर उनका भी the right to defend himself is there, whether the khula will be granted irrespective, लेकिन he has a right to reply. So the date after filing a wakalatnama and taking a copy of the application itself, the defendant then has to file his reply. Now कभी वो delays क्यों करते हैं, कभी वो adjournment ले लेते हैं कि नहीं आज नहीं, वकील नहीं आया, I cannot. आपसे actually I wanted to ask you, क्योंकि ये बहुत सारी खवातीन के साथ होता है कि वो delay tactics हो जाते हैं बीच में, उसके लिए क्या होना चाहिए या क्या कर सकते हैं? So that's exactly what one can do. That आप अगर एक दफा adjournment ले ली, the judge will allow it. उसके बाद अगर adjournment ली और बहुत delay करने की कोशिश की, तो you will go back to that statement. Via statement or an application under section 151, you can actually say that he's not interested, he's delaying it for no reason or for whatever reason, and आप मेरा हक है, आप मुझे, मैं नहीं रहना चाहती, आप मुझे नहीं, आप इनको entertain ना करें. Now there are again, unfortunately हमारी हमारी courts में it depends from judge to judge. There are some judges who will allow that, some will say कि एक और chance, एक और मौका दे देते हैं, लेकिन this will actually help the lady's case, or help the wife's case. Now what happens if he comes, the husband comes in, वो अपना जवाब भी फाइल कर देते हैं, वो on time नहीं कर देते हैं या एक डेट के बाद कर देते हैं, तो फिर दोनों पार्टीज को जज की चेम्बर्स में एक प्री ट्रायल के लिए बुलाया जाता है. Now what is that? That means कि कोई वकील वहाँ मौजूद नहीं होते, सिर्फ जज होती हैं या होते हैं, और उनके सामने दोनों पार्टीज होती हैं. And at that time the judge acts as a mediator. वो mediator की तौर पर वहाँ होती हैं या होते हैं, और उनकी वहाँ then he or she decides whether कि कोई सुलह हो सकती है या नहीं हो सकती. And at the end, if the wife or the lady still says कि मैं नहीं रहना चाहती, हमने बात कर ली, अब मेरा नहीं, I don't want to live with this man, या मुझे इस मैरिज से निजात चाहिए, तो खुला will be granted on the same day. Okay. ठीक है जी. So now अच्छा, so I know there are a few questions coming up, but I have those points in turn, so I'll answer that. अच्छा जी. तो अब ये है कि now both process मैंने आपको समझाए. एक one is कि जब नहीं आए defendant, one is जब delay करे, sorry, and then third is जब आए और you go through the whole process. अब तीन तरीके बता दिए. अब जब खुला का order grant हो जाए, आपका जो वकील है, they have to take a certified copy of that order, right? One for you and the other one is sent to the union council. Union council क्या होता है? Union council sorry about that. important pointers पे बात कर रही हैं और लोग इतने शौक से, इतने गौर से सुन रहे हैं. I hope कि आप लोग सब सुन रहे थे, कितनी इन्होंने important बातें की हैं बैरिस्टर साहब ने, उन्होंने बताया कि क्या है. I hope कि आप सब उन्हें नोट कर लिया. और अगर कोई चीज आप लोगों को लगता है कि आपसे मिस हो गई, इंशाल्लाह ये वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल पे भी जाएगी, आप उसको दोबारा देख सकती हैं. वहाँ पे कोई अगर इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए वो वहाँ मौजूद होगी.
और ये आप लोग ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये हमारे पास नोट हो रहे हैं, ये हम अभी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जरूर इनके बारे में बात करेंगे। एक चीज मैं आपसे कहूंगी, बैरिस्टर साहिबा का आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, शी इज गोइंग टू रीजॉइन अस शॉर्टली। उसमें ये कि आप लोग प्लीज आपके हम सबके कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तभी हम आज इस मौजूद है इस फोरम में, इस वक्त इस सेशन में। और खुदारा आगे की अपनी जिंदगी के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जिनको भी आप जानते हैं अपने सर्कल में, ये जरूर बताएं कि शादी से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले जो है अपना आप निकाहनामा घर पे लेकर आइए। उसकी पूरी इजाजत होती है आपको लाने की, और ये भी हम बैरिस्टर साहिबा से भी आगे बात करेंगे। उसमें आपके पास फुल इजाजत है कि आप कोई शक ना कटवाएं। ये अक्सर जो है मस्जिदों में उनको पहले से कट कर दिया जाता है। तो जब आप अपना जो है निकाहनामा लेकर आती हैं, या आप अपने फादर से कहें या भाई से, या जो भी है घर में बड़ा, उनसे कहें कि वो लेकर आए निकाहनामा, उसको आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से लेकर आए, उसको अपने पास घर पे रखें, उसमें उसको स्टडी करें अच्छी तरह से, और इसमें देखें कि आपकी कोई शक कटी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि औरत के जो हुकूक जो उसको अल्लाह ताला ने और जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दोनों ने दिए हैं, उसको कोई भी काटने की जरूरत नहीं है। और उसको आप पहले से ला के स्टडी कीजिए। उसके अंदर ये जो आपके खुला का राइट है या डिवोर्स का राइट है, ये आप बासानी इसमें लिखवा सकती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी शादी का मौका है, हम ऐसी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हक मेहर पे भी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये आपका पूरा हक है। कुछ चीजें हमारे यहाँ कल्चरली बुरी मनाई जाती हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि वी कैन लुक बियॉन्ड दोस थिंग। तो आप अपना निकाहनामा पहले से लाएं, उसको स्टडी करें अच्छी तरह से। उसमें इंग्लिश में शायद इस वजह से नहीं होता है निकाहनामा, वो मैं अभी बैरिस्टर साहिबा से दोबारा पूछूंगी, मेरे ख्याल में से, क्योंकि ये बहुत अरसे से लिखा हुआ आ रहा था, और यही इंदराज हो जाता है आगे जाके। और अभी अभी एक बड़ी अच्छी न्यूज उस दिन मुझे पता चली, एक और सोशल मीडिया के पेज के थ्रू, कि जी अब आप स्पाउस के लिए भी चेक कर सकते हैं पहले से कि उनकी शादी हुई हुई है नहीं। तो ये चीजें अगर आपको उर्दू में भी है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लेकर आए उनको घर में, जस्ट सिट विद समबडी हु इज ओल्डर, योर फादर, योर पेरेंट, अंकल, कोई भी जो आपको लगता है कि हु इज क्लोज टू यू, हु इज अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ बैठे अपना निकाहनामा डिस्कस करें। और इसमें अभी हम बैरिस्टर साहिबा के साथ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें और लिखवा सकती हैं, अपनी पॉकेट मनी के लिए आप लिखवा सकती हैं, अपनी इस तरह की जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं उसके बारे में लिखा जा सकता है। और मेरी बहुत बड़ी एडवाइस होती है पर्सनली ख़वातीन को कि शादी से पहले अपना एक जीमेल अकाउंट, या शादी के बाद एक अपना अकाउंट बनवाया आप, ईमेल, उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अपने भी और अपने हस्बैंड की भी, और इंशाल्लाह जब आपके बच्चे हो उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि डिवोर्स के मामले में हमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं कि जी हस्बैंड का आईडी नहीं है, हस्बैंड पासपोर्ट नहीं है, हस्बैंड मेरा पासपोर्ट नहीं, ये चीज़ आपके पास नहीं चाहिए। इसलिए आप शादी से पहले आप अपने लिए एक अकाउंट खुलवाइए, और आप आपका अपना लॉकर होना चाहिए जिसमें आपकी सारी ज्वेलरी जो है वो आपकी अपनी हो, यानी आपकी चीज आप रखें। ये आपकी होनी, यू आर ओल्ड इनफ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, कि जी आपका अपना अकाउंट भी है, आपका अपना लॉकर भी है जिसमें आपकी सारी ज्वेलरी, आपकी सारी चीजें जो आपको ओनरशिप में मिली है वो सब उसके अंदर जा सकती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास इसी तरह से आते जा रहे हैं, जिसमें किस तरह से चीज़ों को उन्होंने भी कहा, यही वाली बात की है कि वैल्यूबल आइटम्स हैं जो किसी के घर रह जाती हैं। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे बैरिस्टर साहिबा के साथ, और इसके ऊपर भी हम टच करेंगे कि बच्चों की भी कस्टडी का क्या इशू है वो इंशाल्लाह, क्योंकि ये डाइवोर्स जो है वो इतना एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से जब तक एक छोटा सा चाहूंगी कि हम एक छोटा सा पोल सा करें। क्वेश्चन है मेरे पास कि आप लोग कितने, हेलो जी, can you hear me? Can you जी see जी, me and hear me? we can't see you unfortunately and we really want to see you. I do apologize. मेरा वीडियो उस वक्त से on, I don't know why that's not working. Oh, okay, But okay, okay.
Do you want to disconnect and restart? Would you like to sort of hop out of the meeting and then reconnect? I could try for you if you want. I can do ठीक है, that. okay, okay. I'll just do that. मैं जब तक लोगों से गपशप लगाती हूँ, Okay. ठीक है ना? So I'm very sorry to hear कि इतनी सारी खवातीन, मैं उनको कहूँगी कि मेरी बहनें चैट बॉक्स में लिख रही हैं, और वाकई मैं आप लोगों की तकलीफ को समझती हूँ इस चीज के हवाले से कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का। मैं आप लोगों से एक सवाल चाहती हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, उसका मैं आप लोगों से जवाब चाहती हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि डिवोर्स की सबसे बड़ी रीजन इस वक्त पाकिस्तान में क्या है? आप लोगों के ख्याल में से क्या है? आई वुड रियली लाइक कि आप लोग चैट बॉक्स में इसका जवाब लिखें कि नंबर 1 रीजन पाकिस्तान में जो है, आप लोगों को क्या लगता है, या आपके एक्सपीरियंसेस या आपके जानने वाले या किसी भी एक्सपीरियंस जो उनके एक्सपीरियंस हो चुके हैं डिवोर्स के, उसकी क्या सबसे बड़ी वजूहात है? उसमें डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, उसकी वजूहात है? क्या आपका पार्टनर आपके साथ सच्चा और अच्छा नहीं है, या ये कि आपके इन लॉज किसी ने ही लिखा है? तो आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि हम स्टार्ट्स भी पढ़ते रहते हैं, हम उन चीज़ों में भी अभी हम डिस्कस करेंगे बैरिस्टर साहिबा के साथ के व्हाट आर द बेसिक रीजंस, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा डिस्कशन होता है कि जी खवातीन के अंदर आजकल जो है पेशेंस नहीं है, उनके अंदर सब्र नहीं है, उनसे अपनी शादियां नहीं चलती हैं, उनसे नहीं है, वो जज नहीं कर पाती। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि इसमें ओके वानिया, come and join the Zoom room again. Can you now see? No, unfortunately. I do apologize. I have no idea It's okay. why it's not. It's all right. It's all right. I know that you're trying your level best. You know what I did? अच्छा. हाँ, आपकी एब्सेंस में मैंने थोड़ा सा लोगों को इंगेज किया हुआ था, और हम उस तरफ भी आएंगे क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं, बट बिकॉज आप इतनी जरूरी बात कर रही थी उस वक्त खुला के हवाले से, एंड यू एक्सप्लेन द स्टेप्स, I would like you to carry on that we had understood that with you. Ji, please. Sure. Asha, so in all three तीनों जो मैंने methods बताए उससे खुला was granted, right? खुला will be granted in these. After खुला is granted, what happens? आप एक certain आपकी जो भी आपका वकील होगा वो certified copy लेगा, दो, एक आपके record के लिए आपको देगा, और second जो certified copy है वो from the court itself, union council की तरफ, it's CCS to send to the union council. Now, Right. when what is the union council होता क्या है? जब आपका निकाह होता है उसके बाद आपकी एक मैरिज सर्टिफिकेट बनती है। मैरिज सर्टिफिकेट बनने के लिए जो एड्रेस होता है, यूजुअली इट्स द गर्ल्स एड्रेस, समटाइम्स इट इज ऑन द हस्बैंड्स एड्रेस, पर वहां पे जो करीबी जहां रिहाइश हो वहां करीबी यूनियन काउंसिल से मैरिज सर्टिफिकेट बन जाती है। तो द निकाह नामा यू पे अ स्मॉल फी एंड आपकी मैरिज सर्टिफिकेट बन जाती है। पहले जमाने में फी नहीं थी, अब फी है। नाउ तो दैट यूनियन काउंसिल जहां आपकी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो वहां पर आपका ये नोटिस जाता है, एंड वंस नोटिस इज रिसीव्ड, नाउ they are bound to send 3 other notices to you from the union council. सही। वो नोटिस क्या होता है कि अब क्या आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसीजर से इतना फॉलो नहीं होता। द रीजन बीइंग, आई डोंट नो द रीजन, बट इन प्रैक्टिस जो हम देखते हैं वो ये है कि कभी एक ही नोटिस आता है यूनियन काउंसिल से, कभी हर महीने एक आता है, क्योंकि देखिए इद्दत पीरियड 3 महीने की होती है, राइट? सो अगर 3 महीने में टेक्निकली एक महीने में यू सेंड वो यूनियन काउंसिल भेजती है नोटिस। लेकिन अगर नहीं भी आए, एक दफा भी आए, दिस इज सेंड टू द बोथ पार्टीज, टू द हस्बैंड एंड द वाइफ एट दैट टाइम, कि would you would you want to reconcile? अगर आप रिकंसिलिएशन नहीं चाहते तो आप या तो यूनियन काउंसिल जाके ये बता दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए अपनी कि आप नहीं चाहते, या फिर आप नोटिस को इग्नोर करें और फिर आपके वकील जाके वहाँ डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी ये होता है कि आप अर्जेंटली भी डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यूनियन काउंसिल। इट जस्ट अनफॉर्चुनेटली निज़ाम हमारा थोड़ा सा इस एंड पर इट गेट्स अ बिट ग्रे एरिया आ जाता है। टेक्निकली 3 महीने में मिलना चाहिए डिवोर्स सर्टिफिकेट, कभी अर्जेंटली आप कर लें या किसी को वहाँ जानते हो तो आपकी 1 महीने भी निकल आती है डिवोर्स सर्टिफिकेट। So that is something which unfortunately by law it's 3 months, but
sometimes, you know, by law in Islamic law भी इद्दत पीरियड आपका 3 महीने का होता है, right? Now उसके अलावा now अब उस सिनारियो में जब आपके पास निकाह नामा तो है लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है दैट मींस यूनियन काउंसिल में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है आपकी शादी का, तो उस सिनारियो में आपका जो कोर्ट का ये सर्टिफाइड कॉपी आती है खुला के ऑर्डर की, दैट इज इनफ, वो ही काफी होता है कि वो आपका फिर खुला का डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट सही सही, बिकॉज़ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग एल्स, खुला की वो डिक्री ऑन यू, दैट इज इट। उसके अलावा देयर व्हाटएवर यू रिसीव फ्रॉम द कोर्ट इज व्हाट यू हैव देयर एंड यू डोंट नीड टू गो टू यूनियन काउंसिल, आप इद्दत पीरियड खुद ही आप अपना 3 महीने का इस्लामिकली। Another scenario is जब आपको निकाह नामा मिल नहीं रहा, निकाह नामा आप obtain नहीं कर सकते, आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, जिस जहाँ से you know जिस मस्जिद में जो वो मौलवी साहब बिलोंग करते थे वहाँ आप नहीं जा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी you know वजूहात की वजह से निकाह नामा नहीं होता कभी कभी in the hand of the wife or the ex-wife at that time। तो क्या होता है कि आप फिर एक एफिडेविट आपकी योर लॉयर विल गाइड यू कि आपने एक एफिडेविट देते हैं, आप एफिडेविट में कहते हैं जो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन के साथ, सही एप्लीकेशन के साथ कि मेरे पास निकाह नामा मौजूद नहीं है, मेरी शादी इनसे हुई थी, कोई आप एविडेंस दिखा दें कि शादी हुई थी आपकी इनके साथ, या जो भी आपके पास हो, यू नो पिक्चर्स हो गई या एनीथिंग टू प्रूव कि देयर वाज अ मैरिज बिकॉज़ निकाह नामा नहीं है, एंड से कि मैं खुला चाहती हूँ या मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं साथ रहूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि यू नो कि अगर कॉन्जुमेट नहीं हो मैरिज तो क्या खुला की कभी जरूरत है, या कॉन्जुमेट नहीं हो तो क्या डिवोर्स कैसे दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिवोर्स पे तो अभी हम विल टच अपॉन दैट, लेकिन कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज का इस्लामिकली ऑफ कोर्स अगर 6 इयर्स तक आपकी मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई देन ऑटोमेटिकली यू आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ, बट इफ यू वांट एनी डॉक्यूमेंट, यू सी बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू नो इस्लामिक ही तो ये होता है, हमारे मौलवी साहब ये कह रहे हैं, या हम जिस सेक्स में बिलोंग करते हैं बहुत ज्यादा वहाँ पे ये कहा जा रहा है, क्या ये मैं सही कर रही हूँ, हमारा जो फिका है वहाँ से, यू नो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ये सवाल सही भी है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको ये लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इट कांट बी कि आपको आपकी मस्जिद से आपको या आपकी जो जहाँ से भी आपकी जो भी आप फिका से बिलोंग करते हैं, आपके जो यू नो जिनके पास आप जाते हैं अपने यू नो जस्ट टू आस्क, तो वहां से अगर आपको एक लेटर भी मिल जाए या आपको वहां से कोई यू नो बयान मिल जाए, कोई फतवा मिल जाए, उससे कोई टेक्निकली लीगली उस पे इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा, सही। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सॉरी, आई एम गोइंग टू जस्ट इंटरवीन फॉर अ मोमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा दफा होता है कि यस आपके वकील जो होते हैं वो आपके कोई मौलाना साहब या आपके मौलवी साहब जो होते हैं वो होते हैं, और आपकी एब्सेंस में मैंने एक बहुत जरूरी बात भी कही थी, वो हम उसके पास आगे एलैबोरेट करेंगे कि हर औरत को चाहिए कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करे, हर चीज की कॉपी अपने पास जरूर रखे, क्योंकि बहुत दफा ये होता है कि व्हेन वी गो फॉर खुला या हम डिवोर्स या कोई भी और टेक्निकल इस तरह का कोर्ट का मैटर होता है, हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इट्स वेरी वेरी इंटेग्रल कि आपके पास एक ईमेल हो जिसमें आपके पास स्कैन्ड कॉपीज हो अपने निकाह नामा की या कोई भी इस तरह। और आपने जो अभी मौलाना साहब की बात कही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो भी वो कहे वो अपनी तरफ है, उसकी अपनी वैल्यू है, हम उसको कम नहीं कर रहे, लेकिन हम ये साथ में कह रहे हैं कि आप ये कह रही हैं कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, राइट? एब्सोल्युटली। देखिए अब दिस इज आई वाज जस्ट गोना एड्रेस दिस पॉइंट, सो आई एम ग्लैड आपने कह दिया कि बहुत सारे क्लाइंट्स मेल और फीमेल, आई नो वी टॉक अबाउट खुला एंड डिवोर्स राइट नाउ, बट ईदर वे दे वो रिकॉर्ड नहीं रखते किसी चीज का, या वो कहते हैं कि वो लॉकर में पड़ा हुआ था, वो तो मैंने यू नो छोड़ दिया, या वो मैं भूल गई, या वो लॉकर मेरे खावन के यू नो उनके पास है, हाउ डू आई गेट इट आउट, या मैं घर पे या मुझे निकाला गया घर से ओवरनाइट, मेरे पास कुछ नहीं। तो कॉपीज भी आप रखेंगे, आपको ओरिजिनल अगर ना है, कभी कभी ओरिजिनल निकाह नामा की जरूरत पड़ती है when you file for खुला, अगर ओरिजिनल ना भी हो तो you can tell the court कि मेरे पास ओरिजिनल निकाह नामा नहीं है for whatever reason, and that's okay, बट आप कॉपीज आप तस्वीरें खींच लें, आप उनकी आप यू नो अपने आप को ईमेल कर लें, आप एक पूरा सेट बना के फाइल बना लें, आप जैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं आप कर लें। और उसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखिए जब आपकी कभी जब इख्तलाफात होते हैं, स्पेशली अगेन व्हेन यू गो ऑन टू द चिल्ड्रन, जब आप कस्टडी और गार्डियनशिप जो अगेन वी टॉक अबाउट दैट लेटर, लेकिन आप
जितने आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हों जिसमें कोई ऐसी चीज कही गई हो जिसमें आपको वर्बल अब्यूज किया गया हो, जिसमें कोई आपसे ऐसी नाजायज बात की हो, आप उसकी स्क्रीनशॉट जरूर रखें, बिकॉज वो जबरदस्त, दिस इज स्क्रीनशॉट्स वेरी बाद में इंपॉर्टेंट। आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली, या वो वॉइस कभी कभी वॉइस नोट्स भेजते हैं, स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजते। वॉइस नोट्स को एक यूएसबी में सेव कर लें, अपने आप को ईमेल कर लें, ये इसमें बहुत मैं एक चीज और ऐड करूंगी ज़ारा, दैट अगर कोई खातून है जिनको लगता है कि उनके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, तो प्लीज उसकी भी, अगर आप फौरन, मुझे जी पता जी है कि आई जस्ट इंसान कमिंग टू बहुत दैट ट्रॉमा में होता है, प्लीज, जी थैंक यू। आई कम जी। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल पहले कि एक तो व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस, अगर वॉइस नोट्स कोई हो आपके पास तो आप उनको यूएसबी में सेव करें, उसकी बैकअप बनाएं, अपने आप को ईमेल करें, जो आपको बेहतर लगे, बट आप अपने पास रखें जरूर, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली, स्पेशली इफ यू, अगर कभी ऐसा मौका तो नहीं, but अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस हो कि आपकी कस्टडी की बात आ जाए या गार्डियनशिप की बात आ जाए, तो आपको एविडेंस जमा करने की बहुत जरूरत होती है। डिवोर्स में नहीं, खुला में नहीं, लेकिन आगे जाके मेंटेनेंस या कोई और केस फाइल करना हो कि जिसमें आपको वजूहत देनी हो कि आपने क्यों अपने अलहदगी की अपने खावन से, अपने शौहर से, तो उन चीजों के लिए अगर हम वायलेंस और डोमेस्टिक Zara, I've sent you some of the bullet points. Sorry. And this is sort of the kind of a... I'm sorry. Sorry about that. That's okay. So, if we talk about domestic violence, right? अगर आप physical violence आपके साथ हुआ हो, a lot of ladies जो clients आती हैं, उनके दो बहुत बड़े issues होते हैं जो उनके केस में उनको support नहीं करते. One issue is that they do not कि उनके पास proof नहीं होता, evidence नहीं होता of being hit or the abuse. कभी होता है, देखिए, there are times when someone, for example, किसी को एक थप्पड़ मारा गया हो, उसका शायद ब्रूज ना रहे, राइट, लेकिन अगर आपको, आई मीन, आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनको बर्न किया गया है, आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनके साथ बहुत बहुत तशद्दुद हुआ है, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट जिस तरीके से भी आपके साथ वायलेंस हुआ है, सॉरी, आप उसकी तस्वीर खींच लें और उस तस्वीर को आप अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लें। अगर उसकी आपकी तस्वीर नहीं खींच सकती, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप थप्पड़ हुआ या ऐसा कोई बाल खींचे, ऐसी चीज जिसकी आप नहीं कोई वो एविडेंस नहीं ला सकते आप, तो आप अपने करीबी थाना, जो आपके घर के एड्रेस के साथ थाना जो लगता है, वहां जाके एक कंप्लेंट लिखवा दें। उस कंप्लेंट की आपको एफआईआर दर्ज करवाने की या लॉन्च करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक कंप्लेंट लिखवा लें, ना कि अगर बाद में खुदा ना खास्ता आपकी अलर्जी हो गई या आपकी डोमेस्टिक वायलेंस का आपको कभी केस फाइल करना हो या आपको बच्चों की गार्डियनशिप या कस्टडी का केस फाइल करना हो, तो वो आप कंप्लेंट दिखा सकते हैं कि जी मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं क्योंकि उस अब्यूज की मेरे पास कोई वो प्रूफ नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका ब्रूजेस नहीं थे, लेकिन मैंने एक कंप्लेंट उस वक्त दर्ज की थी पुलिस के साथ। ज़ारा, यहाँ पे आई इंटरप्ट यू लिटिल बिट। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जाके थाने में, आई नो कि हम आपसे बहुत टेक्निकल सवाल कर रहे हैं, आप बैरिस्टर हैं, इट्स नॉट योर एग्जैक्टली योर एरिया कि आप उसके ऊपर इस तरह से कमेंट करेंगी, बट बिकॉज यू हैव ब्रॉट समथिंग सो इम्पोर्टेंट, मेरे ख्याल में से सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो यही है कि अगर आपके साथ एक दफा तशद्दुद हुआ है या एक दफा आपके साथ कोई चीज हुई है, तो खुदारा ये मत समझिए कि वो उसके बाद नहीं होगी, वो दोबारा जरूर रिपीट होगी। और मेरे ख्याल में से बहुत सारी खवातीन जो है वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं इसी पॉइंट पे आके। ज़ारा, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो ये समझती हैं कि हम अपने घर की बात जाके निकालेंगे, या उनको हस्बैंड थ्रेट करते हैं कि जी तुमने जाके मेरे बारे में ऐसी कोई चीज क्यों लिखवाई, थाने के अंदर, यू ब्रॉट डिसग्रेस टू द फैमिली, इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्टेप जो होता है वो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल स्टेप होता है ये वाला। जी देखिए, आई एग्री, बट आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय व्हेन आई से कि आप कंप्लेंट फाइल करें, आप एफआईआर लॉन्च ना करें। एफआईआर इज व्हेन ये सारी बातें आती हैं। आपने कंप्लेंट अगर रिकॉर्ड कर ली, राइट, the one problem you may face, but आजकल काफी अवेयरनेस हो गई है, because I work for different NGOs, different charities, हम ट्राई करते हैं कि हम sensitization जो कहते हैं, राइट, sensitization की जो which is lacking in our society unfortunately, especially हमारे पुलिस स्टेशन में हम उनको जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना शुरू की है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि सारे पुलिस स्टेशन इन कराची हमने कवर किए हैं, I'm only speaking for Karachi,
but what we are saying is that what we are trying to do is कि हम उनको हर पुलिस स्टेशन में एक लेडी कांस्टेबल हो जो आपको हेल्प कर सके, अगर ना भी हो तो सबसे पहले ये होता था कि अगर कंप्लेंट फाइल करने जाए वाइफ तो वो तो पुलिस अफसर कहता था कि या जो भी इंचार्ज था उस वक्त कि ये तो मियाँ बीवी का मामला है, आप इसमें कोई आप दखलंदाजी हम तो नहीं देंगे दखलंदाजी। क्योंकि थोड़ी सेंसिटिविटी आई, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, आई वोंट से कि बहुत ज्यादा बढ़ी है, यू नो, तो आप ये कहते हैं उनको कि आप ये दर्ज करें, अगर नहीं तो आप किसी वकील से राब्ता कर लें, आपके हस्बैंड को शायद भिनक भी ना पड़े इस बात की, यू सी, बट आप कंप्लेंट इसलिए नहीं करें कि उस पे के हस्बैंड को आप यू नो जेल एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर, आपने इसमें जाके उसको रिकॉर्ड करवा दिया कि ये मेरे साथ, आपने अपना एक प्रिकॉशनरी मेजर किया, शायद वो रिपीट ना हो, शायद वो रिपीट हो, लेकिन अगर वो रिपीट हो तो फिर आपके पास कुछ तो हो आपके हाथ में। पुलिस स्टेशन की एक और मैं बात करूंगी, then of course I'll have to go back to divorce, उनके भी started on a different tangent। लेकिन बात ये है कि देखिए पुलिस कभी होता है कि the police station they ask for bribes, right? वो किसी ने लिखा भी है अभी, absolutely। जी हाँ, bribes आपसे you know they ask for bribes, आप क्या करें उस पर? ठीक है, if you can you know give a little bit to them, I don't support bribing anyone, unfortunately at some point कोई ना कोई आपको खर्चा देना पड़ता है, sometimes there are some police, if not then you engage a lawyer to come and help you with that, unfortunately that is not in my hands to decide or anyone else's hands apart from the state and the law and order situation you know in our country कि पुलिस अफसरों को कितना कैसे you know how do you tell them not to take bribes, आपको ट्रैफिक सिग्नल में भी अगर आपको रोका जाता है तो you know you have this option of, so I do not support bribing them, I say that you engage a lawyer or take somebody you know with you कि वो you know जरा उनके ऊपर थोड़ा you know जोर डाल के और by कहीं कि आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर ले या फाइल कर ले। Now that is the option of that's when you talk about evidence. If I now go back, this is in terms of both khula, divorce, child custody, guardianship, domestic violence, harassment, अपने लिए आप करें। किसी ने इमोशनल अब्यूज की बात की थी, जी हाँ बिल्कुल। इमोशनल अब्यूज का दो तरीके होते हैं, एक तो आपने लिख दिया और आपने फिर प्रूव किया कि देखिए ये जो मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या मेरे टेक्स्ट मैसेजेस हैं या जो वॉइस नोट भेजा है उसमें उन्होंने मुझे जिस तरीके से वो जिस अंदाज से वो मुझसे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मुझसे पेश आ रहे हैं, दैट इज इमोशनल, दैट कम्स अंडर इमोशनल अब्यूज, दैट इज वन वे ऑफ शोइंग इट। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई पिक्टोरियल एविडेंस तो नहीं हो सकती अपार्ट फ्रॉम स्क्रीनशॉट्स एटसेट्रा, राइट, बिकॉज़ उसमें फिजिकल में तो आपको नजर आता है ब्रूस, वो भी कभी नहीं आता। अच्छा, इमोशनल अब्यूज की भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन उसके अलावा आप ये if you for example are seeking therapy or if you are you know going into couple therapy या individual therapy या चुप के आप थेरेपी जा रहे हैं, कभी-कभी therapy is not appreciated कि आपके खानदान में you know it's looked down upon, या अभी तक we haven't really as a nation become open to therapy as much as we should, ठीक है जी, absolutely होता है कि आप वो एविडेंस जमा करें जिसमें you go to a therapist or you go to you know your like couples therapist or couples therapy में, and आप उनसे एक लेटर लिखवा सकते हैं कि अपने थेरेपिस्ट से कि आपके साथ आपने जो भी not because of course you have a client and you know therapist confidentiality, लेकिन आप अगर अपने थेरेपिस्ट से जाके आप कहें कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक लेटर लिख दें, तो most therapists write that down. They write they will give an opinion ish on exactly आपने क्या कहा, but whatever you have said to the therapist can, क्योंकि आप permission दे रहे हैं, आपको वो लेटर दे सकते हैं आपको, again because it is between you and him. अगर एक couple therapist होगा, उसने भी I have had cases where a couples you know couple therapy के लिए गए थे दोनों parties, and that therapist also gave उन्होंने दोनों side दिए, so वो फिर आप you know they give the husband side also and the wife side also, and they give their you know not they can't really give, they give their opinion let's say on it because they're not a psychiatrist, right? अच्छा, कभी ये होता है, कभी ये सवालात उठते हैं कि मेरा खावंद या मेरी जो बीवी है उनकी मेंटल इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या उनके you know whatever it may be, bipolar है वो, जो भी whatever you know any sort of thing. Now
you need, अगर वो साइकाट्रिस्ट के पास चाहे वो कोई मेडिकल हेल्प के लिए जा रहे हैं तो उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर आप रखें तो यू कैन प्रूव दोज इन कोर्ट्स। ये उस वक्त भी काम आता है जब कस्टडी या गार्डियनशिप का कोई केस हो, बिकॉज आगे जाके आपने you need to prove why, and we'll come to that later, but you need to sort of prove why your child is not safe for that spouse, be it a wife, a man or a woman, either way, ठीक है जी। तो records medical की हो गई या कोई और ऐसी चीज हो गई या तो psychiatrist की हो गई, तो that's very important कि आप ये हर चीज जो आप कह रही हैं documentation रखें अपने पास, अपने को ईमेल करें, वॉइस नोट्स हो तो यूएसबी में डालें, और कंप्लेंट्स की हो तो कंप्लेंट की भी आप हर वक्त। एंड आई यूजुअली फाइंड कि अगर व्हेन यू टेक अ पिक्चर तो आपकी जो गूगल ड्राइव या किसी में बैकअप हो जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली ये हम चीजें सोचते नहीं हैं और फिर बाद में बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाउ इफ आई मूव बैक टू डिवोर्स, अभी हमने पूरा खुला की बात पर हम एविडेंस से भी चले गए। एविडेंस तो of course was more for in general, just as the topic was sort of broached, लेकिन divorce क्या होती है? Divorce is the right that you can be given in your Nikah Nama, ठीक है जी। अब divorce Nikah Nama में okay, let me backtrack, हम Nikah Nama से शुरू करते हैं, फिर हम divorce पे continue from there। Nikah Nama एक legal contract है between a man and a woman, husband और wife के बीच में एक ये contract है, and it should be treated like a contract। Unfortunately हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं या हमारे जो social norms हैं और हम embarrassment से या जो भी या कहते हैं कि हक मेहर नहीं लिखना थी। I mean I've got a client who said कि उन्होंने कहा 30 रुपए दे दें टोकन मनी, बस खत्म, और कुछ नहीं। हक मेहर नहीं देते, लिखवाते नहीं, ज्यादा नहीं लिखवाते, अपनी बच्चियों का सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते, फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, राइट। राइट ऑफ डिवोर्स नहीं देते, उसमें कहते नहीं ये तो आप कह रही हैं कि आपको डिवोर्स, आप शुरू से ही ये शादी को खत्म करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उस वक्त कहा जाता है कि जी कोई इस वक्त नेगेटिव बात नहीं की जाए, डिवोर्स की बात नहीं की जाए, उसके बाद कहा जाता है कि यह खुशी का मौका है। तो हम, और आपके आने से पहले व्हेन यू गॉट डिस्कनेक्टेड, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि आप लोग प्लीज अपनी शादियों से एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले जो है अपना निकाह नामा लाए। एंड आई वुड लाइक कि आप उसमें बताएं कि हम क्या क्या चीजें उसमें ऐड और क्या करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। हेलो Barrister Zehrah, are you there? Can you hear us? You're on mute. जी sorry, वो म्यूट हो गया था जी। No problem. So basically okay, so how do you start from the Nikah Nama? निकाह नामा जो का जो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है, क्लॉजेस 13 to 16 जो होते हैं निकाह नामा पे, उसमें मेहर और डाउरी के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। अब मेहर और डाउरी में आप की दो किस्म की होती हैं। एक होता है मुअज्जल जो उस वक्त ही दिया जाता है, एक होता है गैर मुअज्जल जो एट अ लेटर स्टेज आप दे सकते हैं हक मेहर, राइट। तो अब हक मेहर में मोस्टली कहते हैं चले आप 30 रुपए लिख दें, आप 5,000 रुपए लिख दें, आप 50,000 रुपए लिख दें। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग आपके आपका कितनी कितना हस्बैंड या उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक ऐसा अमाउंट लिखिए अपने हक मेहर की जो क्लॉजेस में जो आपको बेनिफिट करे इफ इन केस द मैरिज डज नॉट वर्क आउट। उसमें आप अगर खुदा ना खास्ता आपकी सलेहती हो जाए तो आपकी फाइनेंस आप एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months अपने आप को आप सिक्योर कर सकें जब तक आपने खुद की पैरों पे खड़ी ना हो जाए। ठीक है, कोई एग्जॉर्बिटेंट डिमांड्स मांगने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज ना मांगे जिससे लगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, लेकिन इतना कि आपकी एटलीस्ट पहले की 1-2 महीने की रेंट निकल जाए या आपके खर्चे निकल जाए, आपकी ग्रोसरी बिल्स निकल जाए। तो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी अमाउंट आप एक लगा दें। तो वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर कभी कभी ऐसी भी केसेस होते हैं जब ओवरनाइट किसी अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल देते हैं। एक वो जो अब ऑफन हम केसेस में देखते हैं कि इन वन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग और एक जोड़ी कपड़ा वो एक लेकर आई, यस एब्सोल्युटली फेमस होता है। तो बात ये है कि आप ऐसे इतना अमाउंट तो लिखवाएं अपने हक मेहर में जो आपको बाद में बेनिफिट कर सके। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि अपना हक मेहर तो आप लिखवाएं, अब ये यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं और यूजुअली होता भी है कि दैट गर्ल डजंट हैव अ राइट, उसके शी डजंट हैव अ से इन दैट एंड इट्स यूजुअली द पेरेंट्स एंड द इन-लॉज इन द सिट।
तो इस चीज को हम अपने किस तरह से इसको लेकर आ सकते हैं देखिए अपने कल्चर के अंदर? अनफॉर्चुनेटली जैसे कि पेरेंट्स को मनाना जरा मुश्किल होता है, बट यू नीड टू पुट योर फुट डाउन एंड वेदर इट बी मैरिज इज विद इन द फैमिली, मैरिज आउटसाइड ऑफ द फैमिली, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी हो, you never know what the outcome will be. खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को प्रिपेयर करें। एज आई सेड, एग्जॉर्बिटेंट डिमांड्स मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्लीज अपने इतना तो आप हक में रखें। एंड आई यूजुअली से कि आप मौजूद मांगे कि आपको मिल जाए उस वक्त ही, तो आपका एक उसी वक्त आपके हाथ में आ जाए, या जो भी हो, या यू नो विद इन अ फ्यू डेज डिपेंडिंग। अच्छा जी, नाउ अब आप अगर आप ये तो हमने 13 to 16 क्लॉजेस की बात की निकाह नामा में। क्लॉज 17 है जो बात करता है अबाउट एनी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन जो आप उसमें लिखवाना चाहें। अगर आप चाहें कि आपके शौहर आपको हर महीने, कि आप वर्क नहीं करती, आप ये एजुकेशन एक पॉकेट मनी हो आपकी, चाहती नहीं है, तो उसमें आप लिखवा सकते हैं कि हर महीने हर माहाना आपको 10,000 रुपए, जो भी आपकी यू नो जो आपकी नीड हो, रीजनेबल है। हाँ जी, एग्जॉर्बिटेंट डिमांड्स ना लिखें, इट रिफ्लेक्ट्स बैड अपॉन यू, लेकिन आप इतना लिखें जो आपकी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सकें। दिस इज, ये आप लिखवा सकती हैं और ये उनको फिर देना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब आप उसमें ये भी लिख सकती हैं ये क्लॉज 17 में कि कभी हाथ नहीं उठाएंगे आपके ऊपर, वायलेंस नहीं होगा आपके साथ। आप उसमें इमोशनल अब्यूज, उसमें फिजिकल अब्यूज, उसमें वर्बल अब्यूज, आप इन सारी चीजों को डाल सकते हैं। आप इस क्लॉज में ये भी डाल सकते हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपकी सेपरेशन हो, तो आपकी बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके हाथ में होगी, कस्टडी किसके हाथ में होगी, बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, कौन सा पेरेंट उठाएगा या मिलके उठाएंगे, राइट? ये आप सब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। ये आपका हक है। और निकाह नामा को प्लीज एक ऐसी डॉक्यूमेंट की तरह ना ट्रीट करें जो सिर्फ साइन करके आपकी शादी हो जाती है। आप इसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करें जो रीजनेबल, अगेन आई विल कीप ऑन सेइंग द वर्ड रीजनेबल, डिमांड्स ना लिखें, लेकिन आप म्यूचुअली अग्री करें। और ये खवातीन, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था कि बहुत खवातीन ये इस बात पे थोड़ी हेजिटेंट होती हैं, घबरा जाती हैं कि मेरा जो अभी होने वाले शौहर हैं या मेरे खावंद हैं वो क्या समझेंगे कि मैं इतनी डिमांड लिख रही हूँ या मान रही हूँ। तो अपने पेरेंट्स को तो आप समझाएं ही, लेकिन अपने पार्टनर या गोइंग टू बी पार्टनर के साथ आप एक दफा बैठ के बात करें, चॉक इट आउट। उनकी भी कोई डिमांड हो तो लिखवा लें, he has a right to, it's a contract between two people. So I know we're talking about women and women's rights, and usually women have been wrong, लेकिन बहुत दफा होता है कि men have been wronged also. You see, we have to balance it. You're right, ऐसा भी हुआ है। उसके लिए आप प्लीज अपने पार्टनर, अपने खावंद के साथ बात करें, आप उनसे डिस्कस करें कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एज अ कपल जानना चाहते हैं, और अपनी बातों को पहले से आप एक दफा डिस्कस कर लें। अगर आप दोनों के बीच में रजामंदी होगी, आप पेरेंट्स को समझाने में आप दोनों के लिए आसानी होगी। You can both approach each parent. ये भी बहुत अच्छी बात होगी कि when you are bringing up all these issues सारे जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगले ने आपको ये राइट्स देने या नहीं देने। तो आपके लिए बहुत बड़ी ये इंसाइट है और एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो ज़ेरा, these are amazing points, even I did not know in so much detail कि आप ये सारी कुछ चीजें उसमें लिखवा सकते हैं। मैं एक मिनट, नहीं प्लीज गो ऑन, क्योंकि एक छोटा सा मैसेज था in reference to हक महर. If you can read the last one, which has been written by Kamal Noor, उन्होंने जो लिखा है, मैंने कहा because we are already, अगर इन-लॉज के पेरेंट्स ने फोर्स किया हो या आपके खुद के पेरेंट्स ने फोर्स किया हो, तो अनफॉर्चुनेटली जो हक महर लिखा होता है वही होता है। यू नीड टू put your foot down and say कि ये मुझे चाहिए, ये लिखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं लिखा हुआ या जितना लिखा हुआ उतना दिया गया आपको, तो फिर you really don't have much of a choice. अब if we come into clause 18 of the Nikah Nama, जो 18वां clause है, उसमें that is the most important clause I feel in the whole contract, which is the right to delegate divorce. जो हमने बात की थी, can a man delegate his right to his wife to divorce herself, to pronounce divorce upon herself, right? Now आप अपने आप तो ये इस पे कभी होता है ब्लैंक छोड़ देते हैं। जब ब्लैंक छोड़ दें तो कभी कभी यू कैन से कि देखिए ब्लैंक था, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, तो आप आप हम फाइल कर सकते हैं। फिर वो डीड कभी चैलेंज हो ना हो, यूनियन काउंसिल कभी नहीं एक्सेप्ट करता है, डिपेंड्स ऑन यूनियन काउंसिल अनफॉर्चुनेटली। बट
you should not cross it out, do not leave it blank. उसमें आप लिखें I want the right of divorce. ये आपका हक है, ये आपका शरिया के तौर पे हक है. आप अपने इस राइट को गिव अप ना करें, क्योंकि ये आप सबसे बड़ी गलती कर रही होंगी. क्योंकि क्यों इतनी गलती कर रही होंगी? इसलिए गलती कर रही होंगी क्योंकि अगर आप when we talk about divorce क्या, अब खुला का आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझाया कि लेंथी प्रोसेस है, 1.5 महीना लगता है, 1.5 से 3 महीने लगते हैं खाली खुला टू बी ग्रांटेड तक, राइट? आप तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास राइट ऑफ डिवोर्स होगी, so then what happens? I know there are some questions, I'll come back to that. लेकिन राइट ऑफ डिवोर्स क्या होती है? राइट ऑफ डिवोर्स ये होता है कि आप अपने आप को राइट ऑफ डिवोर्स, you said you want it. जब आप सोचाती हैं कि आपको अपने खावंद या शौहर के साथ नहीं रहना, आप you can go to a lawyer. आपका एक डिवोर्स की जो डीड होती है वो ड्रॉप होती है, स्टैम्प पेपर पे होती है, वो उस पे 3 दफा एक साथ डिवोर्स के बारे में लिख सकते हैं. इफ यू वांट कि आपको you want to reconcile, आप सोचती हैं कि देखिए मैं फर्स्ट नोटिस भेज देती हूँ नोटिस, उसके बाद मैं चाहूंगी कि 2 और दफा मौका मिले, शायद वो बदल जाए एक्सेट्रा, श्योर आप यू कैन वेट इट आउट. वरना आप एक डिवोर्स डीड में 3 दफा आई प्रोनाउंस डिवोर्स ऑन माय हस्बैंड सो एंड सो who you have the right of divorce, और उसके साथ आपके एक सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का नोटिस लगता है, और फिर आपको वो आप पहले सर्व करती हैं अपने हस्बैंड पर, या इफ इट्स अ जेंटलमैन ऑन हिज वाइफ, ठीक है, तो आप वो सर्व करती हैं. तो टीसीएस रिपोर्ट, जो टीसीएस की जो रिसीट होती है, जो रिकॉर्डेड डिलीवरी की, जो भी आई कीप ऑन सेइंग टीसीएस, बट इट कुड बी एनी रिकॉर्डेड डिलीवरी, उसकी आप रिसीट इस्तेमाल करें, और आप फिर वो यूनियन काउंसिल तक पहुंचाते हैं, आपका वकील पहुंचाता है, वहां पर जाके आपकी ये रजिस्टर होती है डिवोर्स, और फिर वही 3 महीने की इद्दत पीरियड के बाद आपको मिल जाता है. तो अगर आप देखिए खुला में आपको 5.5 महीने तक लग सकते हैं, या एटलीस्ट 6 महीने लग सकते हैं. आई अगेन से कि 3 महीने से खुला को नहीं लगना चाहिए, बट एक बात मैं भी कर रही हूँ. तो एंड देन व्हेन यू ऐड द इद्दत पीरियड आल्सो, तो आपके 6 महीने तो कहीं नहीं गए, ठीक है, for divorce certificate to be issued. But if you have a right of divorce, तो आपको सिर्फ वो 3 महीने के टाइम में, अगर आपने जल्दी भी अर्जेंसी बिल करवा ली, तो आपको वो सारी इद्दत पीरियड तक वेट करना पड़ता है फॉर द डिवोर्स सर्टिफिकेट, दैट इज इट. तो इस तरीके से भी आपकी आसानी होती है. कॉस्ट वाइज आल्सो a khula case can cost anywhere between 60,000 to 1 lakh rupees. Okay. Right? Whereas a divorce matter, to file a divorce, it can be anywhere between 35 to 60,000 rupees. तो आपके पैसे भी थोड़े कम बच जाते हैं. तो इट्स in the larger scheme of things, it's आपके पास राइट होता है, आप अपना एक्सरसाइज करती हैं. Right? Would you believe it, Zehrah, that I till date did not know so much in detail between the difference myself. मुझे नहीं आज पता था, और मुझे बहुत सारी चीजों का थैंक यू कि आप इतने अच्छी तरीके से उसको बता रही हैं कि हम सब, आई एम श्योर कि सब लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है, और कितने हैं राइट्स भी हैं हमारे. बिल्कुल, इट्स माय एब्सोल्यूट प्लेजर. अब अगर हम इसी बात पे जाते हैं हक महर पे, हम उस पे जब आप एक और एडेड जो आपको कहते हैं कि आई वोंट से इंसेंटिव, फॉर दैट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट एक एडेड जो बात होती है अगर आपके पास राइट ऑफ डिवोर्स हो, वो ये है कि आप जब आप ऊपर, इवन इफ अ मैन इज प्रोनाउंसिंग डिवोर्स ऑन यू, तो हस्बैंड इज प्रोनाउंसिंग डिवोर्स ऑन यू, और या आप डिवोर्स दे रही हो क्योंकि आपके पास हक हो डिवोर्स का, राइट ऑफ डिवोर्स हो, आपको हक महर मिलना चाहिए. यू हैव टू हैव योर हक महर, वरना डिवोर्स इज नॉट वैलिड. तो हस्बैंड शुड गिव यू, अगर आप खुद हक में, अगर आप खुद डिवोर्स दे रही हो अपने आप पर, अपने टू योरसेल्फ, और आपके पास हक में नहीं दिया गया हो, यू कैन गो एंड आस्क फॉर इट इन कोर्ट. आप कोर्ट में फाइल कर सकते हो. बट अगर ऐसा अमाउंट हो जो आप चाहते हो कि मैं माफ करना चाहती हूँ, तो फिर आप अपने डिवोर्स डीड में लिख सकते हैं कि मैंने माफ कर दी. लेकिन जब आप खुला के प्रोसेस में अगर सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ हक महर, यू हैव टू गिव अप योर हक महर ड्यूरिंग खुला, अनलेस द हस्बैंड कम्स इन और वो प्री ट्रायल हियरिंग में कहते हैं कि हाँ उनको मैंने हक महर दिया था और मैं हक महर नहीं चाहता वापस, तो फिर आप रख सकते हैं. लेकिन यूजुअली अमूमन इस्लामिकली एज वेल एज लीगली खुला के वक्त पर you need to give back your haq meher that you've received. Just a quick question here, Zehrah, that a lot of times haq meher शायद हमारे पास अगर आ भी जाए या हमारे लॉकर में है, बहुत दफा ये होता है कि जैसे आपने उसको कहा कि जी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, अब उसकी सारी बिलोंगिंग्स, उसकी ज्वेलरी, उसका सामान, उसका जेवर, उसकी बहुत सारी चीजें
वो हस्बैंड के पास रह गई हैं, एंड इट इक्वेट्स और इज मोर देन द हक महर, तो what happens अगर मैं कहूँ कि जी मैं अपना हक महर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपने मेरा सारा सामान रख लिया, मेरी सारी ज्वेलरी, मेरा सारा कुछ आपने रख लिया जो कि हक महर से भी ज्यादा है, तो वो उसको इक्वेट कर देता है? डज दैट हैपन? देखिए उसमें ये हो सकता है कि if अगर आपने खुला का केस फाइल किया है, एंड दिस इज I'm talking only in terms of खुला is why you need to return your हक महर, तो अगर आपने कहा कि मुझे हक महर कभी मिला नहीं, या मुझे आपने हक महर मेरी बाकी चीजें वापस करो या जो भी है, एंड हस्बैंड कहते हैं कि मैंने दिया है या मुझे आपने वापस नहीं दी है, तो इट गोज ऑन टू एविडेंस। खुला will not be granted unless you know about the हक महर। ओके, So then what happens is कि वो मैटर एविडेंस पे जाता है, फिर वो मैटर 3 महीने तक नहीं, वो उसका और देर लगती है क्योंकि दोनों साइड की गवाही पेश की जाती है, एविडेंस पेश किया जाता है, एफिडेविट एंड एविडेंस फाइल किया जाता है, जो से कि मेरे ये तस्वीर है कि मैंने इनको ये दी थी, ये तस्वीर है कि मैंने वापस की थी। कभी तस्वीर नहीं होती, कभी किसी के सामने दी होती, लोग गवाह बन के आते हैं। इट इज अ मच लॉन्गर प्रोसेस देन वो, फिर 3 महीने में आपकी खुला ग्रांट नहीं होती, राइट? ठीक। अगर आपको अब अच्छा, now there's been a recent Supreme Court judgment which says that जो marital gifts होते हैं वो औरत का हक होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा, you can file a case against that in the family court as well। अगर आपके जो एक और केस जो आप फाइल कर सकती हैं वो ये है रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, जो आप अपने साथ डाउरी लेके जाती हैं और आपको नहीं मिला होता, then you can then what you can do is कि आप एक रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स का केस फाइल करें। उसके साथ आपको एविडेंस क्या लगाना होता है? अगेन पिक्चर्स कि आप ये लेके आई थी अपने घर से, पिक्चर्स कि आप अपने या फिर गवाह की ये हुआ था, रिसीटें, ये चीजों की पीपल डोंट कीप रिकॉर्ड, रिसीट्स होती नहीं है बहुत अक्सर, और बेशतर ये होता नहीं है होता है, अमूमन नहीं होता किसी के पास, बट अनफॉर्चुनेटली आपको एविडेंस वो, क्योंकि वो केस जरूर एविडेंस पे जाएगा, सिविल सूट है, इट विल गो ऑन टू एविडेंस, दोनों ही गवाही ली जाएगी, एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन इन चीफ इज बेसिकली व्हेन जो आपका क्लाइंट होता है उनकी सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं ओरिजिनल, और फिर वो रिटर्न हो जाते हैं, एंड अदर साइड की वकील फिर आपको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, आपसे जिरा होता है आपके ऊपर, आपकी जो आपने लिखा होता है अपने एफिडेविट एंड एविडेंस पर या आपके पूरे जो केस में, उसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं आपसे, आपको जवाब देना पड़ता है। सिमिलरली आपके जो शौहर या आपके जो अदर हस्बैंड पार्टनर है, उनकी भी जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सीमिलर रिटर्न होते हैं कोर्ट से, और फिर आपका वकील उनको फिर क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा करते हैं। तो ये पूरा एविडेंस का स्टेज, इट्स क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस, सही, ये पूरा इसके अंदर होता है, ठीक। रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स का केस कैन टेक एटलीस्ट अ ईयर, बिकॉज हमारा कोर्ट प्रोसेस स्लो है, स्ट्राइक्स होते हैं, ऐसे हर डेट 7 से 10 दिन में मिलती है। ये तो फिर ये भी मैं आपको अच्छी गुड जजेस की बात कर रही हूँ, जजेस विल से 2 हफ्ते से पहले हम आपको डेट नहीं देंगे, सही, and in that unfortunately in that scenario you have no other option but to wait, तो उसके लिए साल लगता है। Now apart from that also the you can अच्छा maintenance पे आते हैं, पहले let's just finish the Nikah Nama। So now we come on to clause 19 of the Nikah Nama। इसमें कोई और इसमें वो होती है any conditions on your husband to marry again? Yes, Islamically absolutely, under the law legally अगर आपके शौहर को एक और शादी करनी हो, he needs to take permission from the union council। The union council says, has your wife given you permission, written permission? Okay. If अगर आपकी written permission रिकॉर्ड नहीं हुई technically, this is how it is। आप इसमें ये भी लिख सकती हैं clause 19 में कि मैं इनको permission नहीं देती, he cannot marry again। You have that right to put it in, and I suggest you do put it in, because unfortunately in the scenario nowadays cheating has increased, it's on the rise। I mean itni unfortunately, and this is not and I know there are a lot of gentlemen who've joined in the session also, ये कोई man hating session नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मर्दों के खिलाफ कोई बात नहीं है। unfortunately जैसे होता है, as is the kind of cases that have come before me, I'm trying कि मैं आपको पूरा जनरल व्यू दूं कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो in any scenario। तो उस तरीके में आप प्लीज क्लॉज 19 पे तवज्जो दें, और उससे भी आप लिखें कि sorry, clause 19 says that whether you give the right, and clause sorry, this is my mistake, clause 21 gives you that right to allow divorce or to
sorry, to allow a second marriage or not, etc. कि आपकी रजामंदी है या नहीं. Clause 19 कहती है कि upon divorce, now this is very very important. Clause 19 is important. Why? क्योंकि हमारे ना Islamically there's a gray area. We are working on it. I personally am working on maintenance after marriage, जो alimony कहलाता है. हमारे law में alimony का कोई concept ही नहीं है. हमारे लॉ में भी नहीं है, और हम अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी इस पे बहुत ना दे हैव नॉट शेड एनी लाइट. इस पे उन्होंने कोई कुछ वाज़ेह तौर पे एक चीज पढ़ी हुई है, बट यू कैन करेक्ट मी ऑन दैट, टू व्हाट आई हैव लाइक रेड एंड दैट अ लॉन्ग टाइम बैक, कि उन्होंने कहा था कि जी इस्लाम में ये चीज है, और ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा थोड़ा सा कल्चरल और क्लर्जी सिस्टम ऐसा है जिसको नहीं लेकर आता सामने, वो ये है कि जी अगर हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दिया है तो वो हर चीज उसको मुहैया करके दे के घर, मतलब जैसा वो है उस हालत में उसको छोड़ के जाए, एंड ही हैज टू सपोर्ट हर लेटर ऑन, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती. तो प्लीज कैन यू जस्ट वेरीफाई हाउ करेक्ट इज दिस? So this is something which is in an ideal situation, right? Or if you talk about Islamic, again there are a lot of interpretations, there are a lot of again just the laws that we're trying to work on, the maintenance laws, and I'm very soon publishing my paper on maintenance laws in Pakistan, and whether they should what they should be and how they should be sort of framed. वो Islamic Council से आप अभी से there has been no verification, no verification of the sort. Again, it's all about it's a speculation basically, and I know that because of my research, not delving too much into it, because Islamically I don't want to say something. But Islam does give you these rights, but unfortunately it is not the law. Let's just leave that point. लेकिन अब alimony और maintenance की बात है, clause 19 में आप लिख सकते हैं. Clause 19 इसलिए important है because alimony के laws नहीं है हमारे मुल्क में. There's nothing. Maintenance after marriage is a concept which is not even thought about over here. Not at all. No. Other Islamic countries, आप Jordan ले लें, आप Sudan ले लें, आप Malaysia ले लें, they all have such laws. They are there, and again we're working on these. But उसमें ये होता है, what we're trying to say now is कि we want कि या तो एक percentage, एक amount दी जाए, या कुछ महीनों तक so that the lady can stand on her own feet. I know we're also short on time, but I'll give you a small example. I had a client who came in. She was married for 40 years. Her parents had passed away. She had no children, or she had one child who was very young, जो support नहीं कर सकते. वो अभी university college में खुद थे. उन्होंने कभी, उनकी एजुकेशन नहीं थी, बहुत कम एजुकेशन थी, उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया था, उन्होंने हाउसवाइफ के तौर पे रहे थे, और उनकी जो खावन थे वो उनका पूरा खर्चा उठा रहे थे. उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी घर की तरफ, which is being a housewife is not a easy feat. आप अपने घर में काम करते हैं, घर को संभालते हैं, घर में चीजें करते हैं. उनकी वो जो equitable आपके हैं जो उनकी contribution थी, वो there was no monetary value added to that, right? Because there is none in our law. So she found out after 40 years of marriage that her husband was cheating on her with various women. When she confronted her husband, she was kicked out of the house. She was kicked out. She had no siblings. Her parents were not alive. She had no money. She had nothing to her name. Right. इस सिनेरियो में वो खातून एक पनागाह में उन्होंने शेल्टर लिया, और फिर she tried to make her ends meet, और वो बहुत मुश्किल से लोगों ने डोनेट किया, और फिर जाके वो एक अपार्टमेंट में रह रही हैं. वो भी बहुत क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी, उनके पास इतनी वो नहीं थी, आमदनी नहीं थी, क्योंकि कभी काम नहीं किया ऐसा. तो she went to a bad time. Now इसी वजह से I say that maintenance laws are very important. या एक percentage पे जो सैलरी होती है हस्बैंड की, वो 2 महीने की या 3 महीने की, we are working on this कि दी जाए. सही. कि basically कि we can कि उनको for post marriage maintenance. लेकिन अभी तक लॉ में कुछ नहीं है, इसलिए clause 19 important है कि उसमें आप जो post marriage maintenance के बारे में आप लिख सकें. It's very very important to put that down. So this comes to the conclusion of the Nikah Nama itself. हमने रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स केस के बारे में बात किया. अब आता है मेंटेनेंस. नाउ अब हम कह रहे हैं कि पोस्ट मैरिज मेंटेनेंस तो होती नहीं है, तो पोस्ट मैरिज मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं होती, तो आप मेंटेनेंस का केस कब और किस सूरत में फाइल करते हैं? आप अपने खुला की एप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं,
about maintenance, but only that is your maintenance, and I'll tell you how and why. अपने मेंटेनेंस के बारे में आप इससे लिख सकते हैं, आपको सेपरेट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे है कि आपकी जो खुला की जो अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी शादी यू नो 1 साल 2 साल 3 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, एक ऐसा मौका आया जब आपकी अलैदगी हो गई, आपकी डिवोर्स या खुला नहीं आपने दिया, आपकी डिवोर्स नहीं हुई, you are just separated. Okay. Right? When you are separated, what happens is that you can then stay. You are living at your parents' house, या आपने कहीं रेंट पे घर लिया हुआ है. Till from the day. Hello Zara, you have broken up. Date of separation. उससे पहले assumption होता है कि आप. Can you hear me now? So from the date of separation, from the date of separation up until the date of divorce or when khula is granted, वो जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए आप पास्ट मेंटेनेंस मांग सकती हैं. ओके. वो पास्ट मेंटेनेंस अगर आप अपने खुला की एप्लीकेशन की जो प्रेयर होती है, प्रेयर क्लॉज क्या होता है, जो आपकी जो व्हाट यू आर आस्किंग द कोर्ट फॉर, आप उसमें वो लिख सकते हो. ठीक है. व्हेन यू राइट दैट इन योर प्रेयर क्लॉज, देन व्हाट हैपेंस इज कि आप अगर खुला ग्रांट भी हो जाए, जो पास्ट मेंटेनेंस का अमाउंट होता है उसके साथ अपनी रसीदें लगाएंगी, आपकी मंथली खर्चात लगाएंगी, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टैक्स, सब कुछ लगाएंगी. राइट. जब आप उसको लगाएंगी और साथ में एज एविडेंस, तो आपका खुला ग्रांट हो जाएगा. फिर वो पास्ट मेंटेनेंस के लिए केस एविडेंस पे चला जाएगा. तो खुला हैज गॉट नथिंग टू डू विद पास्ट मेंटेनेंस. तो आप फिर भी मांग सकती है और फिर वो जज डिसाइड करती है बेस्ड ऑन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है. दैट्स वन वे, दैट्स योर ओन स्पाउसल मेंटेनेंस. For a child's maintenance, you have to file a separate case for child maintenance. वो I'll come to that in a bit because अभी let's talk about another thing. जब आप खुला, अगर आप रहती हैं, आप बाहर रहती हैं, आपकी शादी पाकिस्तान में है, आपका to file for खुला or to send a divorce deed, आपकी शादी पाकिस्तान में होनी चाहिए. Right? There is another, अगर आपकी शादी ही बाहर हुई हो, उसकी मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी थोड़ी बात में. अगर आपकी शादी यहाँ हुई हो, आपकी खावन यहाँ रहते हैं, आपकी या बाहर भी रहते हैं, और आपकी जो आपकी अलैदगी के बाद आप बाहर मूव हो गए, आप दुबई मूव हो गए, कनाडा मूव, कहीं भी एनीवेयर इंटरनेशनल अब्रॉड आप मूव हो गए, तो आप क्या करते हैं? आप किसी को अपनी पावर ऑफ अटर्नी देती हैं. राइट. आप पावर ऑफ अटर्नी, आप जिस मुल्क में आप रह रही हैं, आपका जो वकील होगा वो कराची से आपको एक पाकिस्तान से आपको एक पावर ऑफ अटर्नी ईमेल करेंगे, एंड आप उसको फिर प्रिंट करेंगे पेपर पर, उसके साथ अपनी आप NIC कार्ड की कॉपी लगाएंगी, आप अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाएंगी, और आप जाके अपनी जो पाकिस्तान काउंसलेट होता है वो उसमें आप पावर देंगी किसी और. यू कैन नॉट गिव अ पावर, योर पावर ऑफ अटर्नी, your power cannot be given to a lawyer. It has to be given to an individual. क्योंकि lawyer को आप lawyer को आप engage वकालतनामा से करते हैं. राइट. सही, बिल्कुल. आपके बिहाफ पे वकालतनामा पे साइन करने के लिए किसी को पावर देने की जरूरत होती है. तो आपने उस जिसको भी, जैसे आपकी बहन हो गई, आपकी भाई, आपके दोस्त, anyone, it doesn't need to be a relative, उसको आप अपनी पावर देंगी काउंसलेट पे, अपनी सिट पे जाके you will sign it, you will get it attested, you will send that power to your lawyer or to your attorney. That attorney will engage a counsel on your behalf. वो फिर आपके behalf पर एक वकील को engage कर सकते हैं by power of attorney. अच्छी खवातीन के लिए भी है जो आना चाहती है. I think there was somebody who was asking. बिल्कुल, यहाँ पे खातून थी, उन्होंने ऑडियंस में से पूछा था कि मेरे हस्बैंड बाहर हैं, मुल्क में नहीं है, तो मैं कैसे उनको डिवोर्स का ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट करूं. तो अगर हस्बैंड तो अभी तो अभी तो we're talking about अगर आप खुद रहती तो आप पावर ऑफ अटर्नी से केस फाइल कर सकती हैं. जब आपकी तो अटर्नी विल एंगेज. अगर आप बात करते हैं कि अगर आपका हस्बैंड बाहर रहता है और आप पाकिस्तान में रहते. हेलो Zara, we've lost you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Unfortunately, we can't hear you. Sorry, Zara, we lost you in between. We lost you in between for a moment. If your husband lives abroad, if your husband lives abroad, तो फिर आप अपना you have to
गिव हिम नोटिस देयर, तो आप वाया DHL या जो भी सर्विसेज होती हैं आप उनको नोटिस कोर्ट से भिजवा सकते हैं या फिर कोर्ट को दिखा सकते हैं वो जो अगर जहाँ भी रह रहे वहां मैंने उनके एड्रेस से भेज दिया, हेल्प गुड योर सर्विस इज हेल्प गुड लाइक दैट आल्सो, राइट। अगर आपका हस्बैंड भी बाहर रह रहे हो या आप दोनों बाहर रह रहे हो और आपके हस्बैंड इन दैट केस कैन देन फाइल, अगर यू नो इफ देयर एनी men over here, अगर if you ever receive a Khula, right, or whatever it may be, and you need to engage a lawyer, तो फिर आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी सिमिलर तौर तरीके से अपने काउंसलर से अटैच करवा के आप भेज सकते हैं to you know the country and to Pakistan, and then you can thereafter engage a lawyer and then आपके वो represent कर सकते हैं आपके attorney। तो उस basis पे ये याद रखिएगा कि गवाही आपकी अगर गवाही पे आती है बात, खुला के केस में गवाही नहीं होती, पास मेंटेनेंस की बात हो, डाउरी की बात हो, कोई भी केस में हो जिसमें आपका पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को आपकी अटॉर्नी को दिया गया हो, वो अटॉर्नी आपके बिहाफ पे बयान दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एविडेंस। वो फिर दे आर रिप्रेजेंटिंग यू in everything throughout the case, हर एप्लीकेशन पे साइन हो सकता है, उनका एफिडेविट हो सकता है आपके बिहाफ पर, और एफिडेविट पे वो लिखा होता है ऊपर के you know affidavit is by the authorized attorney of Miss or Mr. so and so. Acha. Now if we talk about now another concept is mutual divorce. अभी तो हम बात करते हैं जब काफी you know hostile environment हो, and I always recommend mutual divorce. I think it's the best way forward. I think हमारे पास query भी आई है mutual divorce की भी, and it's been sent by Ahmad. Yes. So when you have mutual divorce, you can formulate a mutual divorce deed, and उसमें आप you can have आप उसमें clauses लिख सकते हैं जितने clauses आप चाहते हैं, लेकिन technically you can also just say that हमारी अनबन हुई है, we cannot live together anymore and we want to end this divorce. उसमें आप दोनों sign करते हो, the husband and the wife signs there, right? And उसमें in a mutual divorce under a mutual divorce deed फिर वही होता है कि it goes to the union council and then thereafter वो 3 महीने के बाद आपको मिल जाता है। A mutual divorce is drawn up by your lawyer. उसमें as I said you can have clauses, उसमें अगर आपके बच्चे हो तो आप उसमें रेफरेंस दे सकते हैं कि चाइल्ड कस्टडी में ये होगा, वरना आप उसी में आप चाइल्ड कस्टडी और उसकी बात कर सकते हैं, and you know then you can use it as a document. Ahmad is also asking, sorry, Zara, he's also asking that how do you get it registered on NADRA? If you could just give a very short reply on that one. देखिए जब आपकी म्यूचुअल डिवोर्स होती है, पहले तो आप अगर यूनियन काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट है तो आप पहले यूनियन काउंसिल से डिवोर्स डीड लेंगे, डिवोर्स सर्टिफिकेट लेंगे, फिर आप नादरा में जाके डिवोर्स सर्टिफिकेट दिखा के अपना नाम चेंज करें टू बीइंग सिंगल। So the process of a divorce certificate is through the union council. Once they issue it after either or you know urgent basis, then you take it to NADRA and then you correct whatever you need to correct on that. So that is an easier way of doing it. That is something which you know helps. अब एक ये बहुत एक दो cases ऐसे आए हैं जो बहुत unusual cases हैं. In fact, more than okay, let me go on the first topic and the second. ये भी divorce के ही मुताबिक के बारे में है. कभी कभी ये होता है कि the husband has a right of divorce, उन्होंने या the wife also has a right of divorce, whatever party mutual divorce नहीं, but usually जो party divorce दे रही होती है other party को, उस divorce deed में उनके वकील की पता नहीं कौन सी की वजह से या उनकी खुद की insistence से वो इतने clauses लिख देते हैं कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, कस्टडी मेरे पास हो जाएगी, you will not get any money, you are this, you know defame करना, ये करना, बातें करनी, basically ऐसी बातें लिखनी और ऐसी बातें उसमें clauses डालने जिसका कोई bearing नहीं होगा. Why is there no bearing? Unless it's a mutual divorce deed which both parties have signed. A single divorce deed signed by only a single party or one party has no bearing in a court of law. That is not a contract, that is not an agreement, that is only a divorce deed. It will only suffice as a divorce deed. उसके आगे कुछ नहीं उसकी value, right? अब there was a case that I had to encounter जहाँ पर you know my client's husband had pronounced divorce upon her, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि you know ये इनका bad character है, ये mentally unstable हैं, इनके बच्चे इनके बहुत सारे इस तरह के false clauses लेकर आते हैं हमारे हजरात बाज़ दफा. जी जी. तो उसमें ये हुआ था कि उसमें because उनका जरा कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, मैटर सिंगापुर तक गया था, सिंगापुर में बच्चा रिजाइड करता, हस्बैंड ने बच्चे को ले गए थे वहाँ किडनैप करके सिंगापुर. तो जब वो केस आर्ग्यू हो रहा था इन सिंगापुर, वहाँ पे उनकी जरूरत थी कि सिंगापुर में ऑफ कोर्स लॉज पाकिस्तान के नहीं पता था उनको, इंटरनेशनल
कोर्ट्स में नहीं उनको अंदाजा होता पाकिस्तान की क्या होता है कोर्ट में. So what happened was that we had to file a suit for cancellation of the divorce deed over here, or of cancellation not of the divorce itself but cancellation of the clauses. और because वो हमें जजमेंट चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन की कि हमें कि बाहर जो कोर्ट है वो उनको पता चले, बाहर की जो जज है उनको मालूम हो कि under Islamic law, under the law of this country, law of Pakistan, a divorce deed signed by one single party only suffices as a divorce deed, does not suffice as other clauses part of the divorce deed. तो ये बहुत अहम बात होती है because sometimes पता नहीं होता. There are times जब either the husband or the wife पर divorce deed कभी serve नहीं होती. रिसीट टीसीएस की रिसीट होती है हाथ में नहीं सर्व आती होती है या कभी या कुछ नहीं होता, या वो कहते हैं कि हाँ, और डिवोर्स सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं कोई अंडरहैंड तरीके से हाथ में आ जाती है. सही. इन दैट केस आल्सो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स से कि हमें डिवोर्स जब कैंसिल करवा दे. देखिए उस तौर पे कैंसिलेशन के लिए आप फाइल कर सकते हैं, बट यू आर वेस्टिंग योर मनी ट्राइंग टू कैंसिल अ डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑफ द सॉर्ट. अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक हाँ जी सॉरी, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपने डिवोर्स डीड की बात कर रही है. बहुत सारे लोग जो हैं वो सादा कागज पे लिख के अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं, ठीक है, और स्टैम्प पेपर. सॉरी, तो उसके अंदर वो तो मेरे ख्याल से वैलिड भी नहीं होता होगा, जस्ट गिविंग इट ऑन पेपर एंड डूइंग लाइक दैट. नहीं, it needs to be on stamp paper. So that's what I'm saying कि it needs to be on stamp paper. उसके अलावा ये है कि आप जब so if you ever think कि मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे सीधे डिवोर्स डीड मिल गई है, यूनियन काउंसिल से एकदम से आ गई, रिकंसिलिएशन का बाद नोटिस नहीं आई है, you can challenge it in court, you have a right, but technically if the man has a right of divorce under the law, or you as a lady or your wife has a right of divorce under the law, आप चैलेंज करेंगे, आप अपना टाइम और पैसे जाया कर रहे हैं. बिकॉज अगर रिकंसिलिएशन नहीं हो रही है आपकी, या अगर आप वो आपसे बात नहीं करना चाह रही अदर पार्टी, आप कैंसिलेशन में जाएंगे भी, वो आपको वापस डिवोर्स प्रनाउंस कर देंगे, you've lost the money that you're doing, because they have a right to do so. तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे इमोशंस आ जाते हैं इन प्ले, एंड वी गेट वेरी इमोशनल अबाउट दीस थिंग्स, बट वन शुड नॉट गेट इमोशनल, बिकॉज if someone is pronouncing divorce on you and you've tried reaching out to them, and आप ट्राई करें कि आप उसको जरूर आप ट्राई करें कि आप reconcile कर लें, that is the best option. लेकिन अगर वो reconciliation में नहीं मान रहे, तो don't challenge the divorce deed, because you, unless of course the clauses हो आपके खिलाफ या फिर कोई बाद में कोई bearing हो इसकी वजह से आपके ऊपर, because it will really serve no purpose of yours at all. But कौन सी, अगर म्यूचुअल डिवोर्स डीड हो, जब दोनों पार्टी ने साइन की हो, उसमें जो भी क्लॉजेस लिखे होते हैं, दोज आर बाइंडिंग, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मींस कि आप दोनों ने अग्री करके ये क्लॉजेस को इन क्लॉजेस को डाला है, दोनों की रजामंदी से क्लॉजेस आए हैं, तो फिर देन दैट इज देन एप्लीकेबल इन कोर्ट. दैट्स व्हाट हैपेंस. दिस इज द क्रक्स. या बताइए आप. अच्छा, अब ज़ारा बात ये है कि हमारी ये इतनी बहुत सारी टेक्निकल बातें जो आपने बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव बताई हैं, विच पीपल शुड नो फ्री हैंड. या तो वो डिवोर्स से पहले उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, या निकाहनामा पे साइन करते वक्त बातें होनी. लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कुछ कल्चरल सिस्टम ऐसा है, कुछ ऐसी हमारे यहाँ तरीकेकार ऐसे होते हैं कि ये बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं उस वक्त, एंड वी गेट टू नो जब हम एक सूप के अंदर या एक मेस में जा चुके होते हैं और अब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हमारे साथ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, वी कांट कैरी ऑन. खवातीन कहती हैं कि जी अब दिस इज द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस डिसीजन. इसके हवाले से हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं अभी मुख्तलिफ, ठीक है ना, और उसके अंदर आई वुड रियली लाइक अगर हम 5-10 मिनट्स जो है वो स्पेयर कर दे थोड़ा सा हर एक के सवालों के लिए. वो ये एक आमना ने पूछा है कि इफ द बॉक्स डेलीगेट, जो बॉक्स होता है जो डेलीगेट किया जाता है डिवोर्स के लिए, वो अनटिक्ड है, तो क्या मैं फिर भी फाइल कर सकती हूँ डिवोर्स या नहीं? You need to tick the box, unfortunately. ठीक है, आप करेंगी तो यूनियन काउंसिल will reject your matter. आप ट्राई कर सकती हैं, to your lawyer can try and get it done, but most probably नहीं होगा, अमूमन नहीं होगा. फिर शहरबानो खान पूछ रही हैं कि does a woman benefit more from a civil marriage than nikah? No, I think your Nikah Nama especially gives you a lot of rights. आपको खाली सिर्फ आपको इस चीज का को मद्देनजर रखना चाहिए कि आपके क्या-क्या राइट्स हैं, आप क्या-क्या राइट्स लाना चाहेंगे. अच्छा, there is some question from Madiha also. I just want to quickly scroll up and get to that because she was quite keen
to have her question answered. Madiha, आप दोबारा please अपना लिख सकती हैं? She was talking about the patriarchal system of society. She's also spoken about the interference जिसकी वजह से शादियां खत्म हो जाती हैं. There is another question that Momal has asked. Yes, is it legally necessary for a female to change her last name, father's name to husband's name after No. marriage in the NIC and passport? No, Okay. it is your right. You do whatever you want to, whatever you choose. Okay, right. And we have some more questions. I have a huge list. जी. एक खातून ने पूछा है कि my query is if I file against my husband in case of miscarriage, not giving haq meher, case to return dowry, case of harjana, taking away my gold from me without my permission and not returning. My query is if I file against my husband's case of miscarriage, ये सारी जो चीजें उन्होंने कोट की हैं, इसके ऊपर मैं किस तरह से उसके ऊपर केस कर सकती हूँ? Please do highlight my issue and the cost and time period of it. देखिए, okay, so another thing, if you are pregnant and you आपकी technically Islamically divorce या खुला नहीं होता, या आपकी शादी खत्म नहीं होती जब तक you give birth, right? So उसका उस scenario में what happened? I know the question is a bit different. I will just come to that, but ये भी important point जो मैं highlight कर दूँ that you are Islamically the husband is supposed to pay इद्दत पीरियड के 3 महीनों के लिए, right, for the wife. लेकिन अगर वो वाइफ प्रेग्नेंट होंगी तो he is supposed to maintain her until the time she gives birth. ठीक है, Pregnancy के अच्छा, through नहीं हो जी. सकता. Now if we're talking about जो इनका केस है, इन्होंने कहा कि मुझे मिसकैरेज कराई. मिसकैरेज अगर आपके हस्बैंड ने आपको लगता है कि उनकी वजह से मिसकैरेज हुई या आपकी ऑलरेडी डिवोर्स हो, आई डोंट नो, इन्होंने कहा है कि डिवोर्स हो चुकी है हीरा? इन्होंने नहीं कोट नहीं किया, but she's saying if अच्छा. I file against my husband. Okay. Yeah. So a case for dowry will cost you anything between with including court costs between 1,50,000 to 2 lakh rupees. Aram se a lot of lawyers also charge around 3 lakh rupees. It is expensive because time consuming बहुत होता है, बहुत सारे court costs होते हैं, बहुत सारे डेटों पे जाना पड़ता है, evidence तैयार करना पड़ता है. It's not, you know, it's not an easy feat. But आप जब डाउरी के लिए करते हैं, आपको सेपरेट सूट फॉर रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स फाइल करना होता है. अगर आप कह रहे हैं कि आपकी मिसकैरेज आपके हस्बैंड की वजह से हुई है, अगर उन्होंने आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो आपके पास आपने क्या कंप्लेंट रिकॉर्ड की थी, कि आपके पास तस्वीर हैं, कि आपके पास एविडेंस है? अगर है तो then you can definitely file against him. You can also file a criminal case against him under the Pakistan Penal Code. But the problem is that do you have enough evidence? अपना पैसे जाया ना करें. अगर आपके पास कोई कभी आप सिर्फ रिवेंज में करते हैं या इमोशनली करते हैं फाइल आपकी ये, and this I mean this in the nicest way. अपनी अगर आपके पास एविडेंस ना हो, आप प्लीज फाइल ना करें, क्योंकि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, आपके पैसे भी खर्च होंगे और आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा. और इसमें आपकी वकील का इतना फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन. आप किसी के ऊपर एक क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने आपकी कि उन्होंने आपकी मिसकैरेज में वो किया है, हाथ था उनका बहुत. So you need to be very careful, and you can also file a domestic violence case, but again it just depends on what you have. Thank you. The next question is that there's a lady who took Khula last year, and it was declared ex parte as the husband did not turn up. And after 6 months of the Khula, he issued 2 cases on her. One was to return the bridal jewelry and to defame her of erectile dysfunction. So she said that she engaged a lawyer to handle these 2 cases and also filed a case from her side to return the items and other valuables that he had left at the place. And she wants to know what are the chances of her winning the case, and it must to hire a lawyer to get Khula certificate, and she wanted to know the steps of Khula, which I think that we have already discussed about. Yes. Yeah, we've already touched on that. So what? Okay, so she's talking about her return of her dowry articles, right, and her gifts. Gifts, as I said, is right, but again, you have to sort of put the receipts etc. down, and आपने court में file करना होता है return of dowry articles का case, जो मैंने पहले mention किया था. You provide whatever evidence you have, and then you file the case, and then you wait and see it. And then you can retrieve that amount, that thing. As far as I think Khula, sorry, और क्या सवाल था उनका?
उनका ये था कि he's also he has asked her to take back the she had defamed him of erectile dysfunction, so he's saying that I don't want that. He's saying that you are defaming the gentleman, so he wanted There her, he was contesting technically against that. anything that is filed in court is yes public record, but it cannot be used as there's a high court judgment on this also. It cannot be used as a for defamation purposes. जो आप कोर्ट में कोई आप कोर्ट की कोई भी डॉक्यूमेंट में आप जो लिखती हैं या लिखते हैं वो आपको that cannot be used in a case against you for defamation. There's another question that has come just now. There's a lady who's asked for khula from her husband, but the husband is now threatening her and he's putting false accusations about adultery on her before marriage. So how does she contest with that? If he's saying she has committed adultery, does he have any proof of that? Now, if he can file a case, but then it depends कि उनका case, कि उनके पास क्या evidence इनके खिलाफ, क्या उनके पास screenshots है, what does he have to prove that she has actually committed this? And अगर वो threaten कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं तो पहले से जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा लें. लेकिन अगर वो कभी केस false case file भी आप उनके खिलाफ करते हैं तो she can say कि I feared this from before. देखिए आप प्रीएम्प्ट करें मेजर्स को, प्रीएम्प्ट करें कि क्या होगा, क्या हो सकता है. जब आप प्रीएम्प्ट करेंगी आप अपने आप को सिक्योर करेंगी, आप कंप्लेंट फाइल करेंगी, आप जो भी अपने तरीके से करेंगी, डॉक्यूमेंट्स रखेंगी, एविडेंस रखेंगी, जो भी उस तरीके से आप अपने आप को, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सिचुएशन अकर करता है, यू कैन सेव योरसेल्फ देयर. Okay. Can you please elaborate that in Islam the right of divorce is for men and the right of khula is for women? And in Nikah Nama, does that clause mean right of divorce for women? Usually, this clause in Nikah Nama is like a waste of word and people cut it off. No. Let me just, I think I've mentioned this before. देखिए, Yeah. right of divorce in Islam सिर्फ मर्द के पास होता है, शौहर के पास होता है. निकाह नामा में जो right of divorce बीवी को दिया जाता है वो ये है कि उनको शौहर का राइट दिया जा रहा है by the शौहर, by the husband, to pronounce divorce upon herself. राइट फिर भी शौहर का होता है, वो शौहर अपना राइट उनको डेलीगेट कर रहे हैं. ठीक है. खुला का राइट इस्लाम ने औरत के को दिया है, मर्द के पास खुला का राइट नहीं है. तो ये डिफरेंस है. So technically, I know it sounds a bit strange, लेकिन आपके पास the right of divorce is the right that the husband is giving his own right to you to pronounce divorce upon yourself. That is the main difference. Right. अच्छा ज़ारा, I will add, देखिए हम बहुत सारी इस तरह की बातें कर रहे हैं because you're a lawyer, आपकी वो टेक्निकल एरिया है, आप उनके उस तरह से लॉज के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सवालात के जवाब दे रही है. बट थोड़ी सी रियलिटी में ये भी होता है कि हम जाते हैं कोर्ट के अंदर कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो चाइल्ड कस्टडी हो, अभी भी हैव नॉट टच्ड अपॉन दैट, दैट्स अ वेरी इंटेंस टॉपिक ऑन इट्स ओन. उसमें चाइल्ड कस्टडी हो जाए या फिर ये कि खातून की अपनी मेंटेनेंस हो जाए, वो बहुत दफा उसको नहीं मिलती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज इन कोर्ट, शी इज कंटेस्टिंग इट, शी इज आस्किंग फॉर इट, बट शी डजंट really end up getting it. What should we do in that scenario? देखिए, you will have to appeal. अगर नहीं मिलता आपको या आपको जजमेंट आपके खिलाफ आती है एक्सेट्रा, तो आप अपील करें. You have a right of appeal. You should appeal because it is your right to get that right. या बहुत कम मेंटेनेंस मिली है, जो आपने मांगा है वो नहीं मिला, for whatever reason, so you have a right of appeal and you should appeal it. Unfortunately, there are, sometimes cases are not argued properly, or the judges are not very, aware, or as I said, they don't want to accept, they don't want to agree. They have these preconceived notions or concepts in their head, and they will not, take it forward. मैं आपको एक बार छोटी सी एक एग्जांपल दो देती हूँ. एक केस था जिसमें इद्दत पीरियड के लिए the judge refused to say कि वो इद्दत पीरियड के लिए maintain करे, कि to put it in the order that maintenance should be given for the 3 months of iddat. Okay. So that case is now in appeal. Another case था जिसमें where the judge had said कि मैं ये तो कह रही हैं कि वो मेरे जो शौहर हैं उन्होंने मेरे हाथ को मरोड़ा और पकड़ा और मुझे मारा, तो कभी मैं मजाक में, अगर मैं खुद being a male, even though I'm a judge, मैं अगर अपने कभी बाय मिस्टेक उनके हाथ को पकड़ लिया या खींच लिया, तो क्या उसका मतलब है वो मेरे खिलाफ भी फाइल कर लेंगी?
you know. तो ये थोड़े preconceived notions होते हैं. It varies from judges to judges. I'm telling you, there's been sensitivity training all over, but unfortunately it hasn't reached everybody and everybody the way it should. In those scenarios, you have a right of appeal. Please appeal. Sahi. Thank you very much. You know, जो भी हो. These are such brilliant pointers. जो लोग सुन रहे हैं प्लीज इनको जरूर नोट करें. शायद आपको फायदा हो जाए, किसी और को फायदा हो जाए अगर, एंड आई एम श्योर कि आपके सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए जाए. आई नो कि हमारा सेशन बहुत लंबा हो गया है ज़ारा, बट कैन यू जस्ट ऑल्सो जस्ट स्लाइटली टच अपॉन चाइल्ड कस्टडी, क्योंकि हमारा ये बहुत मेजर इशू है कि बच्चे किसके पास जाएंगे, क्या एज ग्रुप होती है और उनकी मेंटेनेंस का क्या हो सकता है. जी so yeah, unfortunately it's a very I'll brush over it, but ये that is उसमें आराम से 2 घंटे लग जाएंगे because I know it's a very intense topic. guardianship is a very long thing. लेकिन maybe we could have another session on that if you please. We'd love to. Yeah. Guardian, I'll just quickly explain. Guardianship is the difference between custody and guardianship is custody is the physical custody of the child. Guardianship is the legal decision making on the child. ये जो हमारा जो खुला का जो पूरा प्रोसेस होता है, डिवोर्स का प्रोसेस होता है, that is regulated by the Muslim Family Ordinance 1961. Just just putting it out there. The custody, guardianship, maintenance is all regulated by the Guardian and Wards Act 1980. ठीक है जी. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कस्टडी है, दैट फिजिकल कस्टडी, गार्डियनशिप इज the legal decision making. Legal decision making में आता है आपका कौन से स्कूल में जाना है, कभी होता है ना कि पासपोर्ट बनाना हो, कहीं कोई एप्लीकेशन करनी हो, वीजा करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो, स्मॉल थिंग्स जहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट होती है, या दे आस्क फॉर द फादर टू साइन या नो ऑब्जेक्शन देनी पड़ती है. So you file for guardianship because usually what happens is that you file for guardianship so that the parent or the lady has that legal decision making power and guardianship certificate from the court. She can show that anywhere and she can make those decisions. Custody जो है, custody basically अगर आपका मेल चाइल्ड हो, आपका सन हो, आपके पास एक बेटा हो, तो आपके बेटे की custody 7 साल तक जो हजारत पीरियड कहलाता है वो मदर के पास होती है. उसके बाद the father can contest for custody. Now again, as I said, it's very detailed, so I'm not going to go into detail right now. Just a quick one on that one कि अगर बच्चा 7 साल का भी हो जाए और वो कहे कि मुझे माँ के साथ रहना है, तो कहीं वहाँ पे force apply तो नहीं हो सकता. Force supplying empathy, but then you have to prove that you are going to be a better custodian because father. So, and then why the father should not be given custody even during the 7 years? If the father early age पे custody के लिए file कर देते for a son or for a daughter, then what happens is that you need to prove why he needs to prove why the mother can't take care of the child. अगर 7 साल के बाद for example, she needs to prove why he can't take care of the child. Right, so it's very important. For a girl child, for a daughter, it is the Hazara period lasts until she obtains her period. So until she gets puberty, attains that age of puberty. Right. So that's the basic difference between custody and thing. Child maintenance का case file करना हो तो आप एक separate case file करते हैं under the same Guardian and Wards Act, and you can have a separate and for the interim maintenance की भी application आप डाल सकते हैं कि in the meanwhile कि वो आपका जब तक case चल रहा हो for child maintenance, तो आपको एक interim maintenance मिल जाए from the father, which could be school fees, which should be monthly expenses. वो भी एक और बहुत detailed concept में जाना पड़ेगा. So unfortunately, because I have a meeting as well, so I may not be able to delve too much into that. This is the whole scenario. Zehrah, I have one last very important and a slightly longer text I got from somebody. She has written, and I'm just going to read it out, and if you can just answer it in the most concise way. She writes that I have been in an emotional and abusive marriage for 4 years, and then she decided to be independent and go study, which I did, continuing with abusive relationship. And in the last year of my studies, it got so abusive that I had to leave. Since he works from home, he decided to take care of our daughter, and I moved out. This was mutual terms. Later on, after a few months, he started emotionally blackmailing me to come back. During those times, he forced me to bed, which I got out of luckily. Now he's telling everyone that I ran away from home, ran away from a happy marriage, that I have no right to my kids' custody, and we are residents.
I have, we are UAE residents. I have currently come to Park visit my parents, and he is there, and he's blocked me out of every way to contact my child. I want to know, will he get custody just because I left the house without my child? And where is it better to get a divorce, UAE or Pakistan? It depends. If your marriage was registered in Pakistan, you can get a divorce in Pakistan. You can give a divorce or get a divorce in Pakistan. That's not a problem. As far as your custody of your child is concerned, what you need to do is then file. You need to file for custody. And अगर जो आपने इन्होंने कहा है mutually agree किया था कि बच्चे को वहाँ छोड़ना, आप mutually agreement में किया था या ऐसे किया था? अगर agreement में नहीं किया था तो she can file. अगर agreement में लिखा हुआ है signed and stamped agreement, then it should be difficult. Right. Right. So it just depends on what it is, because she hasn't specified. Okay. But now technically you can file. Okay. Yeah. There's just one last question I'm going to ask you about a lady who had questioned us today. If you could just, Namra, if you could just sort of touch a base a little bit on that. She had written about her child. I think my batteries also died. Can you people hear me? Sorry. Yes. Yeah. She had asked that she has a child who's autistic or special. He's not well, and the husband keeps troubling her from time to time. कभी वो बच्चे को ले जाते हैं, फिर वो वापस ले आते हैं, तो वो चाह रही हैं कि वो भी अपने बच्चे की full custody ले लें, क्योंकि she wants to take better care of her child. So she can definitely file for it. आप दिखा दें, और कोई अगर if she has any evidence against, so she can produce that in court, and of course she has a right to file. Everybody has a right to file, unless you have mutually agreed in an agreement to state that you cannot, Okay. So I'm just hoping, I know we've gone way above our time. Zara, you have commitments as well, and I will let you off the hook. Thank you so much that you have taken out time and you have shared such important things. बहुत सारी चीजें आज मुझे भी नहीं पता थी. I learned them from you, and I'm sure that the audience has benefited from all of this. And we really thank you कि आपने अपना time निकाला, आप इस forum पे आई हैं. और मेरे ख्याल से हमारा ये session incomplete रहा है. I would love कि आप हमें दोबारा time दें और बहुत सारी और चीजें आपके साथ हम discuss करेंगे. It has been my absolute pleasure. Thank you so very much for having me on board. And I know, yes, of course, I know, okay, sorry for rushing the last bit of custody and guardianship. Unfortunately, I do have commitments. Yes, I would love to come back, and if you would love to have me, and we could speak in detail about other things. उसके अलावा just बस यही है कि अपनी rights के लिए both men and women के लिए मैं कहूँगी कि अपनी rights को please समझें, जानें, किसी की बातों में ना आए. कभी भी आपका, अगर आपको लगता है कि इवन अगर आपका वकील आपके लिए सही काम नहीं कर रहा, तो आप प्लीज एक और ओपिनियन ले लें. अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कि जज नॉट ये नहीं कि राइटफुली, लेकिन कभी आपको लगता है कि जज इज बायस्ड समथिंग ऑफ द सॉर्ट, तो फिर आप अपना केस ट्रांसफर कर सकते हैं. आपके पास हर चीज का हल है. यू हैव अ राइट ऑफ अपील, you have a lot of ways legally to help yourself, but how you can help, that is the legal way of help, of the law helping you. But how can you help yourself? अपना निकाह नामा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि उसको आप देखिए, उसको Absolutely. उसको सही तरह साइन करें, अपनी राइट्स को गिव अप ना करें, अपने हक को गिव अप ना करें. वो आप अपने आप के ऊपर वो that's you can help yourself there. Nobody else can. So start from there. And then, as I said again, keep your evidences with you, keep your voice notes with you, keep your recordings with you, and I hope that inshallah, people will benefit from the session. So thank you. Thank you so much, Zara. Have a great day, and Jazakallah. God bless you कि आपने इतनी अच्छी बातें जो आप लॉयर हैं, आप चार्ज करती हैं इन सब चीजों के लिए. आज आप इस फोरम पे आके आपने कितने लोगों की हेल्प just फी सबीलिल्लाह किया. May Allah bless you for this. And thank you so much for honoring and giving this time to us on this platform. So have a wonderful day, and thank you so much. You're welcome. It's been my pleasure. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. मैं आप लोगों के 2-4 मिनट और लूंगी आखिर में. हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं बैरिस्टर साहिबा के कि उन्होंने आके हमें टाइम दिया, आज इतनी सारी अच्छी बातें की हैं. जाते जाते मैं क्विक सब दोबारा आप लोगों को बताती जाऊं कि प्लीज़ जब आप लोग शादी के बारे में सोचें या अभी भी टाइम है, आप अपना एक ईमेल ज़रूर बनाएं अपने लिए.
उसमें अपने सारे कागजात अलग कीजिए। अगर आप डिसाइड करती हैं कि आपको खुला, डिवोर्स जो भी है, जिस रास्ते के लिए भी अगर आपको ये स्टेप उठाना है अपनी ज़िंदगी में और आपको अशद मजबूरी है, उसके लिए आप प्लीज़ अपना एक अकाउंट सेपरेट बनाइए, अपने हस्बैंड को किसी को बगैर बताए हुए, और उसमें आप थोड़ी-थोड़ी जो आपकी अमाउंट है, कुछ सेविंग्स हैं, आपकी कोई ज्वेलरी है, उसमें सारी कुछ चीज़ें अपनी अलग उसमें अपना रखें अपनी। तीसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को फ़ौरन इस बात की भी इत्तला दें कि आपका ये इरादा है कि आपने आगे जो है यू वांट टू टेक द स्टेप। हो सकता है कि आप नहीं बताना चाह रही हैं, जिसके अगर आप बताएँगी तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपके हस्बैंड। तो उसमें ये है कि अपने लिए जब आप ये सोचें कि जी मेरे लिए इस शादी में रहना अब नामुमकिन है, मैं अब इसको कैरी ऑन नहीं कर सकती, तो सबसे पहले ख़ास तौर पे ख़वातीन को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ना फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। और कभी-कभार हम बहुत डिस्ट्रॉट होते हैं, हम इमोशनली बहुत टूटे हुए होते हैं। तो इसके लिए जैसे शी एम्पावर्स यू के जैसा फोरम है, हम यहाँ पे कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अगर कोई और आपका दोस्त है, कोई बड़ा है जिसके साथ आप अपनी दिल की बात कोई शेयर करना चाहते हैं, तो एक शख्स अपनी ज़रूर ज़िंदगी में इस तरह का रखें, कोचिंग की तरफ आएँ, काउंसलिंग की तरफ आएँ, ये सब चीज़ों को ज़रूर तरजीह दें। जहाँ अगर आप अपने पैसे अपने कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, मेकअप पे खर्च करिए, इन चीज़ों के ऊपर भी आप ज़रूर सोचें इसके बारे में और कहें कि जी मैं इसके लिए भी एक बजट बनाऊँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आए कि मैंने करना क्या है, और उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हस्बैंड को एकदम से बोलना है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ से ही कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले अपने आप को देखें कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ कोई ऐसा काम कर रही है, यानी चीटिंग है, जैसे अभी उन्होंने बैरिस्टर साहिबा ने भी मिसाल दी है, क्या आप कोई जॉब इख्तियार कर सकती हैं? क्या कोई आप अपना कोई काम ऐसा कर सकती हैं, कोई स्किल आपके पास है, कपड़े सीने हैं, कोई घर से बैठा हुआ आप कोई काम कर सकती हैं, कोई जॉब आप क्या कोई तलाश कर सकती हैं। अगर आप अपने आप को चाहती हैं कि मैं आप समझती हैं कि जी इतने साल हो गए मैंने काम नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की या यूँ नहीं किया, आप छोटे-छोटे कोर्सेज़ करें। अब बहुत सारे इस तरह के फ़ोरम्स हैं जहाँ आप जाके छोटे कोर्सेज़ कर सकती हैं। आप जाइए वहाँ छोटा कोर्स कीजिए, अपने आप को ब्रश अप कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए, या ये कि अपनी रिज़्यूमे बनाएँ, जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने आप को थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, फिर अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, अपने कागज़ात, अपनी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता करके जमा कर लें, और उसके बाद आप जाके अपने हस्बैंड के साथ जी ये बात अगर अच्छे तरीके से हो सकती है कि जी अब मैं नहीं रह सकती, तो वो आप करें। नहीं, अगर आपको लगता है कि बहुत ही अब्यूसिव सिचुएशन है मेंटली या फिज़िकली, तो इसमें बहुत सारी बातें हम ये जैसे डिस्कस की कि जी पुलिस को इन्वॉल्व किया जा सकता है, या और इदारों को, एनजीओज़ हैं, जो है वो उनको आप रीच आउट कर सकती हैं और कह सकती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। उसको आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ताकि ये जो बाद के प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि डिवोर्स के बाद ये हो गया कि जी बच्चे का अब क्या राइट होगा, अब वो किसके पास जाएगा, खींचातानी चल रही है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, अब अपने आप अपने बच्चों के लिए भी वो काम कर रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नम्रा, यू आर आस्किंग कि कहाँ पे एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के लिए? आप जाइए, कोर्सेरा है, यूडीमी पे $5-10 के बहुत सस्ते जो हैं वो कोर्सेज होते हैं, और जैसे खान अकेडमी हो गई, वहाँ पे आप छोटे-छोटे कोर्सेज कीजिए। एंड आप लिंक्डइन लर्निंग पे चले जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी हो सकते हैं। अपने आप को ये इस तरह से, जैसे हम जिहाद के लिए, जंग के लिए जाते हैं ना, तो हम अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। हम अपने आप को इक्विप करते हैं, तो आपको अपने आप को इस तरह से इक्विप करना पड़ेगा। मैं दोबारा ये कहूँगी कि ये ऐसा फ़ोरम नहीं है, जिस पे हम कहेंगे कि जी नहीं, डिवोर्स इज़ द बेस्ट वे आउट। नहीं, वाक़ई में अगर आप समझते हैं कि आपकी मैरिज सेवर हो सकती है, क्योंकि अच्छी और बुरी चीज़ें जो हैं वो हर एक के साथ होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ बचत हो सकती है, काउंसलर्स हैं, कोचेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, उनको आप जाएँ, उनसे मिलें। आप उनसे हत्तुल इम्कान अपनी कोशिश, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जहाँ आप बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन-लॉज़ है, ये चीज़ हर इंसान, यहाँ तक कि मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। तो इस चीज़ के अगर लिए अगर आप कोई तरीक़ाकार निकाल सकती हैं, और सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि जी आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएँ। आप अपना घर खुद बनाएँ, इसमें कोई गुनाह नहीं है, गलत बात नहीं है, हमारा सोशल कल्चरल इश्यू है, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना घर बनाएँ, अपने हस्बैंड के साथ मूव आउट करें, अपना अलग रहें, अगर आप कर सकती हैं इस चीज़ को,
पुश कर सकती हैं तो ये आप करें. और yes, you can please, Sultana, you can anytime contact us on Instagram. We are available there. हमारा YouTube का भी पेज है, She Empowers You. आप YouTube पे टाइप करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा. 1-2 दिन में ये हमारा पूरा जो है वेबिनार ये एडिट होके वहां चला जाएगा, ताकि अगर आप लोग का कोई टेक्निकल चीज मालूम करनी हो जो जाहिर है स्किप आउट हो जाती है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक इट. एंड there are so many people who are writing, if you're IT related you can do free learning for Salesforce and very good jobs. Yes, Ahmad, बिल्कुल ऐसा है. तो अगर आप, I'm so happy to see that we have some gents also over here who are participating. And yes, Moman, हम बहुत सारे इस तरह के सेशंस कर भी चुके हैं. एक हमने इससे पहले एक हमारे साथ थी, शी इज अ डिवोर्स कोच, उन्होंने हमारे साथ इंग्लिश में एक सेशन किया था. हम दोबारा उनके साथ एक और सेशन करेंगे, क्योंकि हम इमोशनल एस्पेक्ट पे काम और बात करेंगे. आज हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें जो है वो सीखी हैं, यानी हमें लॉज के बारे में पता चला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला, खवातीन की राइट्स और अवेयरनेस के बारे में पता चला है. आज चूंकि टाइम की इतनी कमी थी और बहुत इंटेंस टॉपिक था, मैं उन चीज़ों पे तो बात ही नहीं कर सकी जिस पे आज मैं करना चाह रही थी. और वो ये कि जो हाल ही में हमारे यहाँ इतने सारे इश्यूज हुए हैं खवातीन के हवाले से, जिसमें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतनी खवातीन हैं, जिसमें नूर मुख्तम के केस हैं और इस तरह की खवातीन हैं जिनको मार दिया गया है, या ये कि जो अभी 14 अगस्त का सानेहा हुआ है, इस किस्म के भी सिनारियोज के अंदर खवातीन के क्या राइट्स हैं, हमें ये पता होने चाहिए. और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ बहुत सारे बुरे लोग हैं इस मुल्क में या इस माशरे में, वहाँ अच्छे लोग भी हैं. वहाँ लोग वो भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ईदी साहब एक उनमें से थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई इदारे ऐसे हैं जिनको आप रीच आउट कर सकती हैं. एंड सारा डेफिनेटली वी विल डू वन फोकसिंग ऑन कस्टडी ऑल्सो, क्योंकि कस्टडी एक बहुत बड़ा इशू है. हम इस पे ज़रूर बात करेंगे. मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके जो भी शौहर हैं या जो भी आपका स्पाउस है, और अगर आप चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर इस चीज़ को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया जाए तो ये उसमें भी बेहतरी होती है. क्योंकि बाज़ अक़ात बच्चे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से कोर्ट में ड्रैग हो जाते हैं, उनको हर हफ्ते बुलाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉट होते हैं. तो जब आप कस्टडी की बात करने जाएं तो कोशिश करें कि अगर आप अपने स्पाउस से ये बैठ के बात करें कि जी आपका जब बच्चा इस एनवायरनमेंट में जाएगा उसके ऊपर इसका मनफी असर पड़ेगा, तो अगर कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है या आप दोनों के बीच में कोई इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जी बच्चा इतने अरसे तक या इतने साल के बाद या इस तरह से उसकी मुलाकात रहेगी पेरेंट्स के साथ, वो अगर कोई ऐसी बात हो सकती है तो प्लीज उसको भी जरूर सोचें. हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को तोड़ें यहाँ पे आके, या हमारा मकसद ये नहीं है. एम्पावरमेंट ऑफ फेमिनिज्म बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं. हम अपने आप को एक एम्पावरमेंट फोरम कहते हैं, क्योंकि हम एम्पावरमेंट के लिए कहते हैं. एम्पावरमेंट किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो या कोई और हो. तो एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम फेमिनिज्म प्रमोट करें या हम खुदा ना खास्ते ये बात करें कि जी शादी तोड़ दें, घर तोड़ दें. नहीं, हम आपको सिर्फ वो बात बता रहे हैं कि जहाँ हम बहुत सख्ती में हो, मुश्किल में हो, तो आपके लिए इस तरह के जराए हैं, लोग हैं जो आपकी मदद के लिए हैं. मैंने अब आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया है. आप प्लीज हमारे सारे पेजेस को विजिट जरूर कीजिएगा. www.sheempowers.you यानी यू जो अल्फाबेट है .com, उस पर जरूर जाइएगा. उसके अलावा हमारा YouTube पे चैनल है शी एम्पावर्स यू के नाम से, और इंस्टाग्राम का पेज तो आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, और फेसबुक पे भी हम मौजूद हैं. हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए. वी आर वेरी मच देयर टू हेल्प यू. आई एम a certified ICF certified coach for women specifically. मैं खवातीन की लीडरशिप डेवलपमेंट में बहुत काम करती हूँ. एनी टाइम यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज फील फ्री टू डू दैट. आप लोगों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. हैव अ वंडरफुल वीकेंड. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये मत कभी सोचिएगा कि आप अकेले हैं. हम लोग जैसे लोग आपके लिए मौजूद हैं. अपना ख्याल रखें. थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल वेबिनार. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.